It is setting up our meeting for Facebook Live. I think it should. Just 1 second, it's loading. Okay, so are we ready? Yes. Okay, great. So assalamu alaikum everybody. It's loading. Yeah, this is Nida Usman Chaudhary, and I, on behalf of Law Education and Research Network, I welcome you all to this very important conversation on legal profession for the many. It's a topic that is very fluid. It has a lot of aspects that are very, very important from the perspective of young lawyers. And at a time like this, when their graduation, their exams, so are we ready? And their future is very much, so in a state of influx. Yeah, this is Nida Usman Chaudhary, and I, on behalf of Law Education and Research, it's very important that we continue this conversation so that we can identify what are the current challenges and how they have been amplified by the ongoing pandemic, because even without the pandemic, young graduates face a lot of barriers to entry. And once they do enter, then they face a lot of issues in the advancement. And this is a profession that has the highest dropout rate. So I think it's very important to have this conversation and to talk about what challenges lie. I will not delve much into the details of those challenges, because I'd like our very important distinguished speakers to identify those challenges and lay them out for you. I will quickly introduce them, and then we can move on to the questions that we have for them. So joining us today is Hassan A. Niazi. Hassan Niazi is an advocate, High Court, with over 6 years of litigation experience. He did his LLM from New York University, where he was a global scholar. He's currently based in Singapore. We have with us Ms. Dania Mukhtar. She's the Director of Legal Affairs at Digital Rights Foundation and holds a BA-LLB degree from LUMS. She was awarded Fulbright Scholarship and pursued an LLM degree from Columbia University. Dania is an advocate High Court and has appeared before the High Court, civil courts, and various administrative agencies and tribunals. She's previously worked with the Chief Justice at the Supreme Court of Pakistan as a research associate and law clerk. Dania has also provided pro bono legal services on gender-related matters. We have with us Moiz Baig. Moiz holds an LLM from Harvard Law School, prior for which he received an undergraduate degree in law from LUMS. He has served as he served at the Supreme Court of Pakistan and the Office of the Attorney General for Pakistan, showing judges of the Apex Court as well as the Attorney General on a variety of cutting-edge constitutional disputes. We have with us Ms. Noor Bano Khan. Noor Bano Khan is a Fulbright scholar and a recent LLM graduate from American University. She has a specialization in international human rights from American University. She's also an advocate of the High Courts with over 5 years of litigation and corporate experience. And finally, we have Abbas Mansoor. He did his LLB honors from UCL, and it's been a year into his practice. Till now, he has explored aspects in civil law and banking law and aspires to go further into environment law. He has been a part of the mooting team and represented Pakistan in the Henry Dunant regional rounds. Welcome all of you, and thank you so much for joining us. The topic is legal profession for the many, a critical review. And to begin this conversation, I think it's very important to ask each one of you turn by turn, as young professionals, what has your experience been as far as the legal profession in Pakistan is concerned? And what are the structural challenges that you have identified? Starting from Hassan, and then moving on to Dania, Moiz, Noor, and then Ali. If we could have your thoughts on that, please. So thank you, Nida. I think
शुरू इस तरह कर सकता हूँ कि 5 आई गेस ब्रॉड थीम्स हैं जो एटलीस्ट मैंने देखी थी जब लीगल प्रोफेशन में स्टार्ट आउट किया था, और अभी भी मुझे नज़र आती हैं जब यंग लॉयर्स बात करते हैं, स्पेशली जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं कि मैंने यूसीएल और लम्स में पढ़ाया है। सो अक्सर आते हैं एडवाइस के लिए और गाइडेंस के लिए हमारे पास, और मोर और लेस अगर ब्रॉड थीम्स में डाला जाए तो 5 मेरे दिमाग में इमीडिएटली आती हैं। मैं उन्हें आइडेंटिफाई कर देता हूँ और फिर डिटेल में हम जैसे कॉन्वर्सेशन चलती है उसके बारे में बात करते जाएंगे। आई थिंक पहली चीज जो हर यंग वकील को पता है इस प्रोफेशन में एंटर करने से पहले ही, वो कॉम्पनसेशन का बैरियर होता है। वो कॉम्पनसेशन का बैरियर एक बहुत इनहेरेंट क्लास डिवाइड इस मुल्क के थ्रू पेनिट्रेट करता है, और लीगल प्रोफेशन में बहुत ही वाज़ेह तौर पे नजर आता है कि एक पर्टिकुलर सोशल क्लास या एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग जो हैं उन्हें बेनिफिट मिलता है अर्ली ईयर्स में, वेराज जो बाकी लोग हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल उनसे मांगा जाता है, डिस्प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ स्ट्रगल मांगा जाता है, क्योंकि लॉ फर्म्स कॉम्पनसेशन नहीं देती। इवन जो सबसे प्रोग्रेसिव हैं, जो कॉम्पनसेशन वो देती हैं वो बहुत मिनिमम अमाउंट का होता है, जिसको मेरे ख्याल से स्टाइपेंड भी नहीं कह सकते। दूसरा जो ब्रॉड थीम मुझे नजर आता है वो ग्रोथ का होता है। अक्सर वकालत में, चाहे आप एक छोटी वन मैन शो प्रैक्टिस में हो या एक बड़ी लॉ फर्म में हो, ग्रोथ के ऊपर कोई फोकस नहीं दिया जाता, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, और लॉ फर्म्स में कोई ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट के ऊपर कोई बात नहीं हो रही होती, कोई उसकी प्रोग्रेस के बारे में कुछ नहीं हो रहा होता। क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, किसी यंग लॉयर को नहीं पता कि आज अगर वो एक जगह काम करता रहेगा, आज से 2 साल बाद या 3 साल बाद वो किस पोजीशन में होगा, क्या वो बेहतर कॉम्पनसेशन में होगा, क्या वो उसे बेहतर काम मिल रहा होगा, या उसकी पोजीशन बेहतर होगी। तीसरी चीज जो कि बहुत जरूरी है वो है इम्बैलेंस ऑफ पावर। इम्बैलेंस ऑफ पावर से मेरा मतलब ये है कि जो सीनियर लॉयर होता है और जो जूनियर एडवोकेट है, उनके दरमियान इस वक्त एक जमीन आसमान का फर्क है इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटी। अब हाँ, हर जॉब में बॉस और जो न्यू फ्रेश एम्प्लॉय होता है उसमें एक डिस्पैरिटी ऑफ पावर जरूर होती है, मगर लीगल प्रोफेशन यूनिक है कि वो डिस्पैरिटी ऑफ पावर कंप्लीटली अनचेक्ड और अनअकाउंटेबल है। ना कोई बार काउंसिल, ना कोई बार एसोसिएशन, कोई भी इदारा ये नहीं चेक करता कि क्या यंग लॉयर्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, यंग फीमेल लॉयर्स एक्सप्लॉइट हो रही हैं, हरास हो रही हैं। इन चीजों पे कोई चेक नहीं है। तो और उसके साथ ही आई थिंक जो चौथी थीम है मेरे दिमाग में वो डिस्क्रिमिनेशन की है। डिस्क्रिमिनेशन अक्रॉस क्लास, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जेंडर, बहुत वाजे तौर पे आई एम श्योर दानिया और नूर जरूर इस पे बात करेंगे, बट ये बहुत वाजे तौर पे लोकल ग्रेजुएट्स के खिलाफ भी डिस्क्रिमिनेशन होती है इन प्रेफरेंस ऑफ पीपल हु हैव गॉन अब्रॉड एंड स्टडीड। एंड आखिरी चीज जिसपे मैंने टच की थी जो लिंक्ड है विद जो इम्बैलेंस ऑफ पावर है, वो इम्प्यूनिटी है। इम्प्यूनिटी का मतलब ये है कि a lot of senior lawyers seem to get away with doing a lot of things which might be considered unethical, which might be considered exploitative, और कोई तरीका नहीं है उन्हें कॉल आउट करने का या उन्हें अकाउंटेबल रखने का। ये इसलिए है क्योंकि हमारी बार एसोसिएशंस जो कि रेगुलेटरी बॉडीज हैं, वो इस वक्त रेगुलेटरी कैप्चर की सिचुएशन में है। वही लोग जो कि ये चीजें करते हैं, वही लोग जाके बार एसोसिएशंस और काउंसिल्स पे कर लेते हैं, तो इस तरह तो कुछ नहीं चेंज होगा। तो आई थिंक मेरे लिए तो एटलीस्ट ये कुछ ब्रॉड थीम्स हैं, मैं बाकियों को अब इस पे बात करने दूंगा। जी दानिया, आप being a woman, of course you can have you can add on to the perspectives that Hassan has shared with us, so we really like you to focus on those as well. Dania, we can't hear you. Is it better now without the earphones? Yes, we can hear you. Yeah, we can hear you now. Maybe the earphones were the problem. अच्छा, so I was saying कि हसन ने broadly सारी वो themes cover कर ली हैं जो मैं भी cover करना चाह रही थी, so I'm not going to repeat those.
उनमें कुछ पॉइंट्स ऐड कर लूँगी। कॉम्पनसेशन वाली बात जो हसन ने की है वो बहुत रेलिवेंट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, because I don't think so there's any other profession that we can talk about जहाँ पे educated people are not being adequately remunerated for their work. So the law firms are exploiting young people, their hard work, and they are getting paid. लेकिन उनको एक आप pocket money भी नहीं दे रहे हो, उनको travel allowances भी नहीं दे रहे हो, right? And they have to end up spending money from their own pockets, and that is, I think, a huge issue for young entrants. फिर यहाँ पे एक जो चीज़ मैं ऐड करूँगी जो मैंने खुद भी फेस की थी, वो ये था कि whenever you talk about pay with your seniors, वो आपको अक्सर कह देते हैं कि why don't you get a teaching job? Why don't you get another job? Right? They'll tell you we encourage you to get those jobs, and the logic is कि आप एक और job करें to cover the expenses of your first job. So it's mind-boggling for me. And and another thing is कि कई law firms हैं, they are paying their young lawyers, but then they take pride in it कि हम पे कर रहे हैं. ये attitude नहीं होता कि these people are entitled to compensation or to pay because they're working. और फिर वो बड़ा fondly आपको बताएंगे जी कि जब हमने काम किया था तो we were not paid. So हम तो और हम आपको वो बैटन पास ऑन नहीं कर रहे, हम आपको पे कर रहे हैं, आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए, राइट? सो इस पे हम ब्रॉडली फिर एज द डिस्कशन कंटिन्यू हम बात करेंगे. तो सेकंड चीज़ है, हसन ने भी इस पे टच अपॉन किया है, वो है कि व्हेनेवर यू एंटर द फील्ड यू आर लेफ्ट एट आपका जो सीनियर लॉयर्स का एटीट्यूड होता है वो आपको बहुत इम्पैक्ट कर रहा है. अब यहाँ पे सीनियर लॉयर्स कहीं तो जेन्युइनली बहुत बिजी होते हैं, दे डोंट हैव टाइम टू ट्रेन यू, बट द प्रॉब्लम इज कि आपका जो आपकी करियर एडवांसमेंट है that is dependent on the training and that is dependent on the guidance provided to you by your senior counsel. That's why you're working with him or her. अब कई जो senior counsels होते हैं, they do not want to invest in female lawyers because उनको लगता है कि that's going to be a waste of time. They are eventually going to get married and probably अभी भी ये practice चल रही है. मेरे time पे तुमसे बहुत 2013 में I graduated and in every interview I was asked these questions. When am I married? Am I seeing somebody? If I plan to get married, मैं तो प्रोफेशन छोड़ दूंगी. एक बहुत सीनियर लॉयर ने तो मुझे ये भी कहा था कि उन्होंने बहुत डेरोगेटरी लैंग्वेज में मुझसे बात की थी, perhaps I'm not going to repeat it, कि मैं लॉयर्स को हायर करता हूँ, सीनियर लॉयर्स को, और फिर वो छोड़ के चली जाती हैं. अब ये जो लॉ फर्म थी इसका एम्प्लॉय रिटेंशन रेट वैसे ही कम था, सो मेल लॉयर्स भी छोड़े थे बट उनका फोकस सिर्फ फीमेल लॉयर्स पे था. अब एक और जो प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है वो अनकेयरिंग और एटीट्यूड्स हैं आपके सीनियर लॉयर्स का. वहाँ पे ये आ जाता है कि सीनियर लॉयर्स जो हैं उनका ये जो एटीट्यूड होता है दैट कैन बिकम वेरी डिस्पिरिटिंग फॉर द यंग लॉयर्स. लाइक एब्सेंस ऑफ प्रेज इज वेरी डीमोरलाइजिंग. अगर आप उनको प्रेज नहीं कर रहे हो उनके काम पे, अगर आप उनको मोटिवेट नहीं कर रहे हो, दैट इज अ प्रॉब्लम. देयर आर सम सीनियर लॉयर्स हु आर नोन फॉर देयर टेम्पर, और बाकी आपको लॉयर्स कह रहे होते हैं कि जी हमने तुमके साथ काम किया, हमने बर्दाश्त किया, ब्रिलियंट बात है. सो यू टेक अप एंड यू टॉलरेट एनीथिंग दैट कम्स योर वे, बट आपको लर्निंग मिलेगी. तो जो मेंटल हेल्थ इश्यूज उससे रिलेटेड है उसकी तो कोई बात ही नहीं करता, और वो एक बड़ा हश हश सा एटीट्यूड है. आई थिंक जो नेक्स्ट चीज़ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कि जब कभी कभार लॉयर्स आपको मुंशीज की मर्जी पे छोड़ देते हैं, राइट? एंड दैट बिकम्स वेरी ट्रिकी व्हेन यू आर अ फीमेल लिटिगेंट. Sorry, not a litigant, female litigation lawyer, because munshis आपको ठीक है बहुत चीज़ें सिखाते हैं. I've worked with brilliant munshis. वो आपको street smartness सिखा देंगे, वो आपको adjournment लेना सिखा देंगे, right? But munshis cannot train you how to conduct a trial, how to conduct cross examination or examination in chief. ये चीज़ें आपको मुंशी ने नहीं सिखानी, ये चीज़ें आपको लॉयर ने सिखानी है. आप मुंशी की बैड बुक्स में एक दफ़ा चले गए तो जो मुंशी हैं वो they sometimes create problems आपके और आपके सीनियर एडवोकेट के रिलेशनशिप में, जो मेंटरिंग रिलेशनशिप है, इसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात कर सकते हैं. कई मुंशीस होते हैं, दे आर वेरी लेडी और दे डू नॉट लाइक female lawyers and they're very vocal about it as well, but sadly you have to put up with it when you enter and when you're practicing at those firms. कुछ जजेस का एटीट्यूड है. फॉर्चुनेटली बहुत सारे प्रोग्रेसिव जजेस अब हमारी जुडिशरी का हिस्सा हैं,
but still ये चीज़ deny नहीं की जा सकती है कि a lot of judges have a problem with young lawyers. They prefer names over arguments. अगर आप young lawyer के तौर पर उनके जाते हो, आपको उस तरह से वो treat नहीं कर रहे होते. अगर आपका opposing counsel को senior lawyer आ जाता है, you see the difference in attitude. और ये भी again कहीं बहुत openly sexist बातें भी आपको कर रहे होते हैं. कहीं opposing counsels आपको trial courts में बहुत sexist बातें कर जाते हैं, जो कि आप उस टाइम पे even if you call out, you are told कि नहीं इसको भी जाने दो. कोई आपको ये भी कह देगा आप उठ के आदमी हैं, आपको वैसे ही किचन में होना चाहिए. And this is something I have also heard, and this is something I was told to tolerate. एक और जो problem आती है, वो अब इस पे भी मैं specifically बात करना चाहूँगी. I have other points, लेकिन अब I'll just end here. हम जैसे discussion continue होगी इस पे बात करेंगे. A lot of law firms now require you to bring in clients, but clients के साथ काम करने का मैं gender पे बात करूँगी कि some clients अगर आप उनको female lawyers assign कर देते हैं, they think कि आप उनके matters को इतना seriously deal नहीं कर रहे. So ये एक problem आ जाती है. And when you have to approach clients, again law firms और legal fields और microcosms है ना society के, अगर society का एक sexist attitude है, वो तो आपको networking में या client coaching के time भी feel होगा. So when you are networking with people, or when you are telling them that अगर if basically आप उनसे network कर रहे होते हैं as prospective client, आपको कई दफ़ा वहाँ पे भी बहुत harassment face करनी पड़ती है. And I won't even talk about it. In fact एक दफ़ा मैं नियाजी के पास गई थी ये problem लेकर कि how do I tell the senior lawyers कि this is the messages that I'm getting from prospective clients, और मुझे networking में ये बहुत discouraging बात लग रही है. Now I'll just leave it to Nida, Noor, to cover the rest of the points. I'd actually take it to Moiz first because I'd want to, I mean, हम ये वाला sequence एक दफा follow कर लें, then we can have an open discussion about it. So we'd like a male to respond to this, and of course, Moiz, you will have your own experiences. And what kind of structural issues or challenges have you been able to identify? And are there any sort of shortcuts? Do you think that there's any discrimination there? Like, are there any special qualities that certain graduates have that kind of, gives them the favor, and then of course that becomes a problem for the others? So like, is that sort of an imbalance, and have you ever experienced it yourself? Thank you, Nida. Firstly, I think this is a great initiative, and thank you for organizing this talk and having all of us over here. I think I'm generally in agreement with the points that Hassan and Dania raised. I think they've covered a lot. But I think one thing that we often ignore in these discussions is that when we talk about discrimination, there is discrimination on the basis of class, there is discrimination on the basis of gender, but there is also discrimination on the basis of geographical location. हमारे मुल्क में तमाम वकील इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में नहीं रहते. I think I think a number of these problems that we talk about emanate from the lack of compensation. So for instance, if you live with your families, and if you come from the largest cities of Karachi, Lahore, and Islamabad, you may be able to work at these law firms and meet a number of your expenses. But if you come from a small town, if you come from a city which does not have a number of opportunities, and if you go on and work in a larger city like Karachi, Lahore, or Islamabad, you're often unable to meet any of your expenses. So Dania and I, for example, both share a similar background in terms of we both clerk at the Supreme Court. So I think a number of people who go and clerk at the Supreme Court, many people may not have that opportunity simply because they're unable to meet their expenses over there. So when I graduated from law school, for instance, I worked at the Attorney General's office for a year, and I worked at the Supreme Court for a year. And both these organizations paid perhaps twice as much as any other law firm. And yet I could not meet my expenses without having some support and some cushion from my family. So imagine a lawyer having to work in Islamabad or Lahore or Karachi. I don't think any lawyer who does not have some support from his family or her family can support themselves. So आपने आधे अपनी आबादी को, आधे वकला को तो आपने पहले ही डिप्राइव कर दिया प्रोफेशन से. आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर बात की कि क्यों 2 साल के अंदर लोग अपने प्रोफेशन को छोड़ देते हैं. And I think that ties it to the point that Hassan made, that sometimes you don't know, because law firms are also very arbitrary. Law firms lack a proper structure. There is no HR department in most law firms. So many young people actually make that sacrifice for 2 years, but after 2 years, when they're completely despondent because they see no avenues, अगर आप 2 साल काम करें, कम पैसों के अंदर भी काम करें, और आपको कोई उम्मीद नजर ना आए आगे की, and if you're continuing to work on very minimal, salaries, then it becomes extremely difficult for you to continue to rely on your families. So, which is why a number of very able and very capable lawyers actually end up leaving the profession.
So I think the themes jiski shuru mein Hassan ne baat ki, if I could add one more theme to that, it would be geographical discrimination. I think one more very important element over here that I'd like to highlight is that we see the bar association and different bar associations, for example, take an extremely leading role on a number of issues. But as far as the treatment of associates is concerned, and as far as the treatment of young lawyers is concerned, we see that there is a silence on the part of the bar as well. And that is because of what Hassan called, it's because of regulatory capture, because of a number of lawyers and office bearers of the bar associations are also have their own law firms. So I think which is why there's, in some sense, and I think in some sense, the legal profession is dominated by a few names, a few law firms, which is why you often feel that even the bar is a silent spectator when it comes to the mistreatment of lawyers. So I think in some sense, we have to reimagine the legal profession. And in some sense, I think younger lawyers have to perhaps organize themselves in the same way that senior lawyers organize themselves in bar associations. I think that's a very important point, because right now, I mean, we're all feeling these issues and we have experienced them in one way or another. But since A, there's not enough conversation on it, and B, there are not enough platforms, then of course these issues remain unaddressed. And even if you try to address them in a smaller individual capacity, they get, you get a lot of negative flack for that. And there's a lot of trolling, and there's a lot of, these big established forces working against you, and they don't let you raise those voices even if you try. So perhaps, this can be a start for such conversations, and then hopefully endeavors to ensue. Noor, how would you categorize the structural challenges that you've identified, 5 years of your experience in legal practice in Pakistan? So yeah, I was just thinking, your initial question was, what has your experience been? And I think if I have to wrap it up in just one word, I'd say 2 words: extremely frustrating. And I think as much as I agree with what has been said so far, I also believe that even when you, and I'm not like, and I guess I am coming from a place of privilege when I say this, but even when you have all sorts of opportunities just to make a mark for yourself, it is quite actually difficult. And the fact that you are a woman, then the expectations are double in terms of not only carving your way through all that patriarchy, but also because somehow there's this presumption that just because you're a woman, your ambition is probably less than the man next to you. And which is, I'm not sure, I know where it comes from, but I mean, it's never really based on the kind of work that you are producing. So it's just one broad एक brush stroke होती है कि क्योंकि आप एक लड़की हो तो probably you were just going to end up getting married, and even after getting married you're probably just not going to give half the attention to the profession, and you have to work twice as hard as the boy sitting next to you just to prove the point that yes, you are interested, yes, this is something serious to you, it's not a hobby, it's a job which you need to get paid for. I think it's very funny, and with due respect to everyone out here, I think one of my I think someone that I've worked for, and he would categorize as someone who's a progressive lawyer, someone who's has all kinds of exposure, good education, etc. Once just said to me, "Aapko paison ki kya zarurat hai?" Then there was this one time when someone said to me, "But you come from an okay family, so it's okay." But while that may be true, it doesn't take away from the fact that I was still giving a certain number of hours to be somewhere, to make something of my own within the legal profession, and I had to. It had to be balanced out some way, and that's always lacking. I think Dania briefly touched upon this, that women often also don't get taken seriously, not only by their partners and their employers, but also by judges. Especially, I think I have been fortunate enough to have some good argue in front of some really good judges who've been very encouraging in the high court. But when it comes to lower courts, I think the mentality is, or the
structure is kind of similar to how law firms treat you, and that's really sad. I've had people tell me that aap to bachchi hain, whereas the person who was standing next to me, the male colleague, was literally a fresh graduate. I had 4 years of experience. It was quite dispiriting. And while you may want to say something, you at the end, you're still, trying to balance, okay, you still want to argue the case and you still want to get taken a bit seriously, not as someone who's probably just feisty or ladaka, as they like to say. And I think one thing that which is often sidelined in this entire argument about pay and being a woman is, which Dania also said, was, growth. So in order to grow, whether it's in a law firm or individually, you need to attract clients. And in order to attract clients, it's necessary not only to network, but also kind of get the work that you really are interested in. So it was quite frustrating. Whereas I joined a law firm saying that I want to do litigation. I have primarily done litigation, but my entire portfolio of the work that I was handed was, these PPP projects, which I was the least interested in, didn't help me make any progression in my career. And any complaint on each time I kind of try to broach the subject of, yes, I'm happy to do this, but I still want litigation, it would just be brushed off and was never taken seriously. And I think when I finally decided to leave, it came to the point, but you never showed enough initiative. So it's really tricky. And I think it's also frustrating. I don't know what kind of initiative was then expected. And I think lastly, one thing that I would really, which is very important, is when we say that they're internships, I feel like some other professions may have some semblance of having actual proper internships, but within the legal profession, जब आप कहते हो कि आप internship करने जा रहे हो, it's always treated as a joke by both. And I think इसमें maybe both the parties are at fault, not just the fresh graduates, but also the employer, because the fresh graduate goes with the attitude that I'm probably going to be asked to just get a couple of printouts, probably fetch some, like paperwork. And if you're thinking about it very conservatively, maybe, asked to get coffee, etc. around the place. And that is how employers also treat you. So koi aapko actually, jab aap internship karne jate ho, no one actually tells you, okay, oh, this is how you're supposed to research, or this is how you learn CPC ke XYZ, basics. Yeah, this is the basics of drafting. No one ever focuses on this. And I think this will take us to one of our next questions, which was the legal education and legal practice ka jo gap hota hai. I think this is one way of bridging it, but it's never actually taken that way. And it's just considered as more of a, everybody in summer holidays will just put it on their CV, I interned, and that's about it. So I think that's also one of the things that we really need to focus on. This is exactly what I was thinking after all of your comments, and I think Ali will be probably in a very good position to comment on the education and the legal practice gap, and I want to give him the opportunity to do that. But I feel that there's a common string in all of your conversation right now, and I think that is that there is this lack of investment in the junior lawyers within the profession, and there's no sort of thinking put into younger entrants, and there's no investment on anybody's part. And so I want to see what Ali has to say about this aspect, and what expectations he had from his legal education, and were they met in the profession, and what are the challenges that he's been able to identify. Ali, are you still with us? Yes. Thank you so much. Yes. So one point I wanted to bring forward was that I've had like 3 years at a law school, and one of the main reasons I feel that a lot of entrants also drop out of the profession is that they really don't know what they're getting into. I had a lot of friends, as per se, who came into this profession not having a realistic outward view of what the Pakistani courts were like and all of that. Into my third year, there were still kids who still thought suits is a real thing in Pakistan. Or if you're working at a corporate law firm, तो आप जाएंगे अच्छे महंगे सूट में, आपको बल्कि डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर पहनने की भी इजाजत का हक होता है. ठीक है. सो ये वाली सोच
रख के लोग जाते हैं प्रोफेशन में, and then expecting they'll have an air conditioned office and all of that. I had class fellows who even when went into the field had that. Now I was let's say I had the ability to see courts at a very young age due to some legal matters of my family, and I could experience what LDA Plaza was. ये LDA Plaza नामी चीज क्या चीज होती है. And I feel कि any law graduate or any person even wanting to go into the field, और आपका अगर कोई रिश्तेदार भी आप उसको जाना चाह रहे हैं, आप उसको एक दिन बस लेके जाओ, कहो कि बेटा ये that office is not where you're only going to be situated. These are the different departments you'll be walking to. You won't have a car, you won't have buses even. You have to walk there, and you're going to be wearing black in 40-degree temperature in the most humid city at in August, and you will be going to these courts, and they don't expect that. And when they come here and they're expecting and they don't want to put in the work, as Noor also pointed out, they also don't want to put in the effort in the work. So I feel even law schools also need to prepare their students for the reality based aspect. I remember one of our only two teachers pointed to us out that there is a big gap in what your imaginations are of the profession, but there should be something from that aspect, that this is what you're getting into before you apply. Second of all, from a law university point of view, as Noor again pointed out, that research skills and all of these things, they're never taught to us. You're taught this is the exam, you have to study this material, and then it's done. You give that, you're a lawyer. But are you a lawyer? Because when you go into the field, the first question, and that is me moving on to my second point, is that आपको कुछ आता नहीं है, तो आपको हम ट्रेनिंग देंगे, ठीक है? And you get into that, and I've worked at 3 law firms by now, and that's saying a lot in a year. 3 law firms, and that is my law career. I've worked while doing those law jobs. I was a moot coach at a university. Why? Because I needed money. I was a debates coach, and at one time my family was facing financial issues. So I was doing 3 jobs. I was doing coaching, and then I was going at night and teaching kids as well, to keep up my balance of movement. But let's come to my second point. So the second point was that then I'm at a law firm, and there are a lot of lawyers telling me you really don't know what research is. And I'm like, but I've done all these things, and I am giving you these 90-page dossiers on from a 1,000-piece research department. And then if that isn't research, then what is? At least tell me the bar I have to reach now, then I can get paid. And in interviews you're told you will get paid when you start becoming an asset to the firm. So what is an asset to the firm? अगर मैं सुबह 8 बजे से लेके रात के 11 बजे तक बैठा हुआ हूँ, तो I must be slightly bit important, कि आपने मुझे इतने तक रोका हुआ, and you're giving me work. So I am adding something at least. You're not having to research or any of that. Okay, I get it. You are considering that under teaching. I'm not learning law though. I'm still learning that there's Google, there's Pakistan law site, and that is it. You're not helping me draft something or any of that, and that will be 6 months of my first career. And that has been the case for a lot of my friends who have come into this field, and have been working at a law firm for a year now, and are putting in that effort, and are doing from printing things to photocopying things to running and getting anything to just that. And they don't know where the bar ends. When are you considered an asset, कि आप important कब होंगे? And the third bit, coming down to pay, I come from a privileged family background, and one of the main questions I've been asked in a law firm interview have been, आप गाड़ी कौन सी चलाते हैं, आपके अम्मी अब्बू क्या करते हैं, ठीक है? Before I'm asked कि आपके grade क्या आए थे, before I'm asked, that's what I'm asked. And the second thing that I'm asked is कि अच्छा, can you travel here on your own? आप अपना बिल उठा सकेंगे? I can say हाँ. But I have met, through my mooting career, a lot of Punjab University graduates and people from, Dera Ghazi Khan and all of that, who want to come settle here. Lahore में रहाइश महंगी है, वो अपना fuel तो नहीं cost कर सकते. And then, a quite recent experience was that, a lawyer was criticizing me on my suiting, because he's like, you need to get a better suit. And I was like, sir, if I have pay, I will get a better suit. But जब तक मुझे कुछ मिल नहीं रहा, तो फिर
कुछ होएगा नहीं, and he then progressed to not give me work for the next 2 weeks just for that statement. So it's a very interesting hegemony कि you need to look presentable, but you also need to not be paid. I was criticized on my hair because I have curly hair. If that's a big problem, so I have to also keep it neat and steady for somehow in control, and that is a big criticism. And it isn't considered what kind of lawyer I am or what asset I'm providing to the firm. वो चीजें I am not even given any recommendation कि if I'm doing everything right. It's just कि बेटा ये आपके अंदर inequalities हैं, ये fix करते जाएं. And if I fix them, there are more inequalities. या तो पहले बता दें हमें कि ये आपके flaws हैं, ये आप fix कर लें और इसके आगे हम चलते हैं. But वो भी नहीं होता. So pay का तो अभी we'll discuss in a broader detail. But these are some of the facts. You know, law schools. एक आप फर्म में भी आ रहे हो कि व्हाट आर यू गेयरिंग टुवर्ड्स, आप इंटर्न भी कर रहे हो तो आप सिखाना क्या चाह रहे हो बच्चे को. एंड इफ यू आर एट लॉ फर्म, बच्चे को सिखाओ, आपका एसेट बनेगा. इट्स नॉट दैट मच पे दैट दे आर आस्किंग फॉर, बट या लेट्स मूव फॉरवर्ड. So it's almost like, you know, they treat you like survival of the fittest mentality के साथ कि जो तो चल गया कारतूस वो ठीक है, बाकी I guess it's more of, you know, testing your character and your patience as opposed to, you know, actual, you know, merit in your intellectual abilities. And I suppose Dania wants to add something to this, so I'll just let her do that. Yeah, we can't hear you again. Yes, we now can hear you. Alright, so I think Ali ने जो कुछ बातें की हैं that were also making me very nostalgic, not in a good way, about my first year in practice. So अब first job की बात है, when ये interviews में I don't know, Ali इस पे बेहतर बता सकते हैं, but it's still considered a taboo subject to talk about money, right? If you talk about pay raises after 6 months, that is still considered a taboo subject. फिर वो आपको कहते हैं कि आप greedy हैं, you're not working for because you're passionate about law, right? But problems अब मैं आपको बताती हूँ कि for instance मैं जो पहली internship थी, अब internships बहुत सारी unpaid होती हैं. अब मैं उस टाइम पे लम्स में थी और मैं डॉम्स में थी. मुझे जाना होता था जब हाई कोर्ट डेली, तो मुझे 2 buses लेकर जाना होता था. पहले मैं वॉक करके जा रही थी because I wasn't paid anything as a student. आपकी पॉकेट मनी होती है, and I didn't want to ask my family repeatedly for pocket money कि मेरे सारे expenses को पूरे करें, right? आप पहले जाके खड़ी हो तो गर्मी में, because जून जुलाई का महीना होता है जब आपकी छुट्टियां होती हैं. अब बस आपने एक मिस कर दी, आप उसका वेट करते रहते हो. अब फिर एक बस लेते हो, आप फिर एक जाके दूसरी बस लेते हो, उसके बाद फिर जाके वो आपको उतारती है मॉल रोड पे, फिर आप वॉक करके जाते थे हाई कोर्ट में. अब ये जो सारी कम्यूटिंग है, it adds to your fatigue, right? अब ये तो internship होगी. Even when I was getting paid, I was using Uber and Dania. वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि मुझे टाइमिंग्स का ध्यान रखना पड़ रहा था. मुझे ये होता था कि मैं रात को 8 बजे फर्म से निकल जाऊँ, रात को 9 बजे फर्म से निकल जाऊँ. कई फर्म्स का ये ट्रेडिशन है, स्पेशली लिटिगेशन साइड पे, कि द वर्क विल नॉट बिगिन जब तक ए पार्टनर का मूड ना हो. अगेन पार्टनर्स बिजी भी होते हैं, तो सिर्फ मूड की बात नहीं होती, बट वो बहुत कभी कभार लेट स्टार्ट होता है बिकॉज कोर्ट की टाइमिंग्स आपकी मॉर्निंग में होती है. और अगर आपको अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी को देखना है तो फिर you're constantly, you know, asking this question, do I stay? I would not be able to prove myself. अगर मैं यहाँ पे बैठी हुई अगर मैं यहाँ पे रुकूंगी नहीं, और अगर मैं पहले चली जाती थी, I explained it to a few of the people that I was working with. Some were understanding, some used to tell me कि क्या कहते हैं, नहीं, we don't care, find something, find somebody to carpool with. अब मैं रहती भी माशाल्लाह से फेज 8 में हूँ, जहाँ पे और कोई रहता भी नहीं होता था. So it was also difficult to find somebody to carpool with, and these are real concerns that you have. And जब आपके colleagues, आपके partners और lawyers इन चीज़ों को उस तरह से invisible करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो they do end up having an impact on you, right? और अब यही जब आपकी पे है, आपने कोर्ट का खर्चा भी उसी में से निकालना है. कोर्ट्स जाना क्या कहते हैं कॉन्स्टेंटली ईजी नहीं है. डेली कोर्ट्स जाना इज वेरी एक्सपेंसिव. उसी पे में से आपने अपने बात की एक्सपेंसेस भी पूरे करने हैं. अब आपको अपने जो डेली मंथली कभी कभार आपको ऑफिस वाले काम दे रहे होते हैं लॉ फर्म्स, और वो आपकी एक्सपेंसेस भी उसमें पूरे नहीं कर रहे होते. फॉर इंस्टेंस आपको कह दिया कि इस्लामाबाद में केस लगा हुआ है, आप जाओ. मैं कहती थी कि हाँ मैंने जाना है, पर प्लीज आप यू नो देन अरेंज अ कार फॉर मी. बाय द थर्ड ईयर आई वाज जस्ट आस्किंग फॉर थिंग्स. कि मैं जब तक बताऊंगी नहीं तो शायद मैं इसका कुछ नहीं पता चलेगा. So I started asking for it.
उसका प्रॉब्लम ये होने लग गया कि वो किसी और को दे देते थे जिसके पास अपनी गाड़ी होती थी और वो चले जाते थे। फिर नूर ने भी ये बात पॉइंट आउट की, वो कहते हैं कि आप इनिशिएटिव नहीं ले रहे, इनिशिएटिव ले रहे हैं, आप इनेबल नहीं कर रहे हो वो काम करने के लिए। एंड अगेन you are made to feel so bad when you're asking about it. ये तो एक अलग कॉन्वर्सेशन है। लाइक आपको बार बार ना टोन डाउन करना पड़ता था, आपको बार बार जाके बताना पड़ता था कि नहीं, you need the money because you're working. They will probably respond अगर आप उनको अपने पर्सनल सर्कमस्टांसेस बताओगे, सो एक इंडिविजुअल लेवल पे आपकी पे इंक्रीज कर देंगे, राइट? But that's not a professional way of doing things. So I think that is something that they need to think about. जो दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है वो लीगल एजुकेशन वाली अब बात करना चाहती हूँ। वहाँ पे ऑफकोर्स लॉ स्कूल्स आपको नहीं प्रिपेयर कर रहे होते बहुत सारी चीज़ों के लिए, वो आपको नेगोशिएशंस के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे होते, वो आपको प्रैक्टिकल ड्राफ्टिंग के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे होते, डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू आर द कोर्स इन लॉ स्कूल जो लीगल ड्राफ्टिंग पे डेडिकेटेड होता है। तो आप जब आते हैं स्टार्ट में आपको टाइम लगता है ये सारी स्किल्स पिकअप करने का। अब मैंने चूंकि स्टार्ट किया था लिटिगेशन में और नूर की तरह मेरे साथ भी हो रहा था, मुझे बार बार कहा जा रहा था कि नो आप कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों नहीं ड्राफ्ट करती हैं, आप कॉर्पोरेट वर्क की तरफ क्यों नहीं जाती। आई वॉज मोर पैशनेट अबाउट लिटिगेशन, लेकिन वही फिर सीनियर लॉयर्स के पास अक्सर टाइम नहीं होता, कोई दरमियान में ऐसा मिडिल मैन नहीं है जो फिर आपको ट्रेन कर सके, तो वो एक स्ट्रक्चर नहीं एग्जिस्ट कर रहा होता। फिर अक्सर जो सीनियर लॉयर्स हैं वो आपको रोक कर रहे होते हैं, फिर वो आपको रेपिटेटिव टास्क दे रहे होते हैं, राइट? एक ही और बार बार सिर्फ रिसर्च कर रहे हो बैठ के, दैट इज नॉट एडिंग टू योर स्किल सेट। आपकी रिसर्च अच्छी हो जाएगी, आपने 50 टाइम्स रिसर्च कर ली है डिफरेंट क्वेरीज का, आपकी रिसर्च अच्छी हो गई है, इसके बाद आपने और स्किल्स सीखनी है। आपने देखना है कि कोर्ट्स में हम आर्ग्यू कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, कोर्ट्स में मैं ये मिस्टेक कर सकता हूँ, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए। आपको क्लाइंट मीटिंग्स में जाना होता है, आपको देखना होता है कि लॉयर्स कैसे कंडक्ट कर रहे हैं। But some lawyers, I have been fortunate to work with some brilliant lawyers who were not that insecure about their clientele, but some lawyers are very insecure about their clientele, so नहीं young lawyers को बताना चाह रहे होते। फिर जो एक और प्रॉब्लम आई थिंक जो मैंने बात करनी थी वो एक जेंडर पर्सपेक्टिव से करनी थी कि कई लॉ फर्म्स में उन्होंने फीमेल्स को हायर किया हुआ, बट इफ यू नोटिस दे हैव अ सेपरेट रूम फॉर फीमेल्स, राइट? तो वो कभी कभार जो रूम होता है वो बेसमेंट में होता है, कभी कभार वो रूम इतना इनविजिबल होता है कि आपकी इंटरेक्शन ही नहीं हो रही होती आपके सीनियर लॉयर्स के साथ। आप एक साइड आप जितना काम कर रहे होते हैं वो अक्सर इनविजिबल होता है क्योंकि वो किसी मिडिल मैन के थ्रू जा रहे होते हैं। तो ये भी एक बहुत रियल प्रॉब्लम है जो कई जगहों पे एग्जिस्ट करती है। जस्ट हायरिंग फीमेल लॉयर्स इज नॉट इनफ। उनको लगता है हमने हायर कर लिया सो बस यहाँ ड्यूटी इज फिनिश्ड। So I mean, Hassan, I'll bring the conversation back to you because I mean, I want you to highlight थोड़ा सा international perspective से भी कि ये इसी तरह से है बाकी जगहों पे भी कि नहीं। दूसरा, क्या ये सारे trends corporate और कमर्शियल प्रैक्टिस में ज्यादा हैं या फैमिली लॉ या बाकी उसमें भी? दिस इज समथिंग जिस पे बाकी भी कमेंट कर सकते हैं, लाइक बिकॉज फैमिली लॉ के अंदर ज्यादा विमेन ओरिएंटेड केसेस हैं ये वो, सो वहां पे भी क्या इसी तरह की डिस्क्रिपेंसीज एग्जिस्ट करती हैं? और जो एक मेन क्वेश्चन है जो क्विकली आई वुड वांट सबका कमेंट उसके ऊपर कि क्यों नहीं हमारा प्रोफेशन जो है वो रिटेन कर पाता अपनी ह्यूमन रिसोर्स को, या एक तरह से इनफैक्ट उल्टा एक बहुत नेगेटिव एटीट्यूड है, ऑलमोस्ट लाइक जैसे कि यू नो दे वांट टू एक्चुअली डिस्करेज यू एंड दैट डिस्करेजमेंट स्टार्ट्स while you're studying as a student and then it translates into your professional world as well. तो ये log at और SEE और ये जिस तरह की और complications create करे जा रहे हैं, कभी कह देते हैं कि जी आपको सुप्रीम पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ रजिस्टर होने पड़ेगा even before you actually join a law school. तो ये इस किस्म की बातें एक्चुअली शो करती हैं कि एक तरह से वो जो इन्फ्लक्स है लॉ ग्रेजुएट्स का उसको डिस्करेज भी किया जा रहा है. सो लाइक why are we so hostile towards our junior lawyers and why can't we retain this human resource and why are we so like, what are the inherent, is it an insecurity, is it some like what is this? So if you can comment on that, Hassan. I think international perspective की जहाँ तक बात होती है, मैं ये आपको बता सकता हूँ कि जब मैं अभी recently सिंगापुर मैंने मूव किया, तो जमीन आसमान का फर्क से भी अगर कुछ ज्यादा हो सकता है तो शायद वो एग्जिस्ट करता है इस वक्त, in terms of growth, in terms of enumeration, in terms of how you are treated, in terms of transparency, बहुत ज़्यादा फ़र्क है. और मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जिस जॉब के लिए मूव किया था
उस चीज पे और उस टाइप ऑफ वर्क पे मैंने एक्चुअली पहले कभी काम नहीं किया हुआ था. लीगल वर्क है मगर इट वाज आल्सो अ न्यू थिंग टेक इंडस्ट्री में काम करना, राइट? सो मेरे से एक्चुअली किसी ने ये नहीं कहा कि ये देखिए आपको तो टेक इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो 3 साल तो आप पैसे भूल जाए ना कि आपको पैसे मिलने हैं. ये एक यूनिक पाकिस्तान का मसला मुझे नजर आता है, क्योंकि मैं जब लॉयर से बात करता हूँ जो इंडिया में है, जो क्लोजेस्ट जुरिस्डिक्शन है हमारे, उनके साथ भी ये नहीं होता. उनकी पे स्ट्रक्चर हमारे से कई ज्यादा बेहतर है. क्या कहा जा सकता है कि उनका लीगल एजुकेशन सिस्टम शायद बेहतर है, ठीक है, बट मुझे ये नहीं समझ आती कि जब कहा जाता है कि आप अभी सीख रहे हैं और रिसर्च सीख रहे हैं, मेरे तो एक्सपीरियंस में, अब शायद बाकी लोग मेरे से इख्तलाफ करें, आप लोग भी बताएं, मैं मेरे एक्सपीरियंस में रिसर्च सीखना कोई बहुत बड़ा तीर मारना तो नहीं होता. 3 महीने में मेरे ख्याल से कोई भी रिसर्च करना सीख जाता है. ये जो 2 साल आप एयरडीज के साथ शादी आपकी करा देते हैं और इस बुनियाद पे आपको कोई पैसे नहीं मिलते, मुझे तो इसकी समझ ही नहीं आती. आप अगर एक इंसान को 2 साल सिर्फ रिसर्च कराएंगे और आप उसे कभी कोर्ट में एक एडजर्नमेंट के अलावा कोई चीज करने नहीं देंगे, तो वो किस तरह सीखेगा, किस तरह ट्रेनिंग होगी, जिसकी बुनियाद पे आप कहते हैं कि उन्हें पैसे नहीं मिलने चाहिए क्योंकि आप तो कभी कोर्ट गए ही नहीं. और बहुत से वकीलों को इसी एक छोटे से पॉड में फंसा दिया जाता है कि देखिए आप तो अभी सीख रहे हैं, 1 साल गुजर जाता है, अभी भी सीख रहे होते हैं, 2 साल गुजर जाते हैं. अगर आप मुझे कंपेयर करेंगे सीनियर लॉयर के साथ, तो फिर तो मैं हमेशा ही सीख रहा हूँ ना. उनके लेवल, उनके इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ज्यादा है मेरे से. तो हमें कभी ये नहीं पता चलता, जिस तरह अली ने भी कहा कि व्हेन आर वी रेडी, वो कब खत्म हो जाता है, क्योंकि ये तो एक प्रैक्टिकल स्किल है, इसको हम कहते ही प्रैक्टिस है क्योंकि पूरी जिंदगी हम सीख रहे होते हैं नई चीजें, तो वो तो कभी खत्म ही नहीं होना. सो बाहर तो ये कुछ भी नहीं होता. मैं अमेरिका की इसलिए नहीं एग्जांपल देना चाहता कि चले वो बहुत डिफरेंट स्ट्रक्चर है हमारे से, बट वहां पे भी जब कोई जेडी करके स्कूल से निकलता है, लॉ स्कूल से, ये नहीं होता कि वो टोटली 100% कंप्लीट लॉयर बन चुका होता है. उन्होंने भी बहुत कुछ अभी सीखना होता है, मगर उनकी पे जो होती है, इट इज अ लिविंग वेज. यहाँ पे लिविंग वेज ही नहीं मिलती, राइट? जिस तरह मोइज ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया जियोग्राफिक डिस्क्रिमिनेशन का. मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं लम्स के, जो कि बड़े शहरों से नहीं होते. बड़े शहर से मेरा मुराद ये है कि जहाँ पे हाई कोर्ट होता है. अगर आपने हाई कोर्ट की प्रैक्टिस सीखनी है ना, आपको चंद शहरों में होना जरूरी है, वरना आप नहीं सीख सकते. अब वो लोग एक तो मूव करें, समझे लाहौर मूव करते हैं, वो रेंट पे रह रहे होंगे, उनके पास प्रॉब्ली ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, उनके बेशुमार खर्चे होंगे. लॉ फर्म्स इन चीजों को देखती ही नहीं है, इन चीजों को टेक इनटू कंसिडरेशन ही नहीं करती. यहाँ पे जब कॉम्पनसेशन डिसाइड हो रही होती है किसी की, हर बंदे के डिफरेंट कंसिडरेशंस हैं. मेरे ख्याल से हर किसी को लिविंग वेज मिलनी जरूरी है, मगर जो लोग इस तरह के स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं, उन्हें जरूर एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए उनके साथ, उन्हें बेहतर तरीके से ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है हमारे सोसाइटी में इस तरह के चेंजेस करना और इस तरह रहना विदाउट फैमिली सपोर्ट, जो काफी लोग रह रहे होते हैं. और लोग इसलिए छोड़ जाते हैं इस प्रोफेशन को क्योंकि इन चीजों को कभी कोई कंसिडरेशन ही नहीं मिलती. आपने एक ब्रॉड सी बात कर दी है कि जस्ट डील विद इट का किस्म का हिसाब है कि हमें नहीं पता, इसी तरह चल रहा है, हमारे साथ भी इसी तरह हुआ था, आप किसी तरह निकाल लें कोई सोल्यूशन इस चीज का, हमें नहीं पता, ठीक, एंड दैट्स अबाउट इट. तो फिर वकील क्या करते हैं, कोई टीचिंग कर लेता है, कोई कोचिंग कर लेता है, कोई और चीज कर लेगा, बट फिर उन चीजों को भी आप यूज करते हो उनके खिलाफ. मिसाल के तौर पे मैं टीचिंग करता था, तो मैं यूसीएल जाया करता था शुरू में टीच करने. तो यूसीएल रायवन में दफ्तर गुलबर्ग में होता है, ऑब्वियसली आने जाने, क्लास पढ़ा के आने, हमेशा मैं क्लास के वापस फर्म आता था और काम खत्म करता था. मगर मुझे अक्सर कहा जाता था कि आप तो दफ्तर में होता ही नहीं है उन वक्तों पे. तो एक तरफ मैंने उस चीज को भी कवर करना है, मगर वो चीज मुझे जाके फिर यूज भी मेरे अगेंस्ट होती है जब कन्वीनियंट हो. दूसरी चीज आई थिंक क्यों हम रिटेन नहीं कर सकते, मेरे ख्याल से जो
इम्बैलेंस ऑफ पावर वाली मैंने बात की थी थोड़ी सी। एक तो माजरत के साथ काफी ज्यादा हमारे सीनियर वकला, मेरे ख्याल से काफी वकला को मुझे तो लगता है जरूर एंगर मैनेजमेंट की क्लासेस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा मसला है हमारी लीगल प्रोफेशन में। मैं आपको निदा बताता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स की कुछ स्टोरीज मैं आपको 2 बता देता हूँ, फिर मैं दूसरे लोगों को टाइम देना चाहता हूँ। एक मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ कि जी एक सीनियर वकील जो कि कई यूनिवर्सिटीज में जाके आप लेक्चर्स भी देते हैं यंग लॉयर्स को, उन्होंने एक फर्स्ट ईयर एसोसिएट का ड्राफ्ट देखा और उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टेपलर का पिन निकाल के उनके उस एसोसिएट के अंगूठे में डाल दिया और कहा कि आपको ये एक फिल्मी लाइन लगेगी मगर ये असल में हुआ था। कहा कि आपको दर्द हो रही है क्योंकि मुझे इस तरह फील होता है जब मैं आपका ड्राफ्ट पढ़ता हूँ। ये वो यंग लॉयर क्या करें आप मुझे बताएं? बार एसोसिएशन के पास जाए, बार काउंसिल के पास जाए, किधर जाए? वो कुछ नहीं करते। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि लॉयर्स ने लॉयर्स को ही होल्ड टू अकाउंट किया हो। एक गैंग की तरह तो क्लोज रैंक हो जाते हैं जब लॉयर्स ही एक दूसरे को क्रिटिसाइज करें। दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूं कि मेरा एक और स्टूडेंट था, उसने पहली अपनी जिंदगी की इंटर्नशिप की लीगल फ्रेटर्निटी में और उससे जो मेल सीनियर थे उसने उसे सेक्सुअली हरास किया और कई बार उसे सेक्सुअली सजेस्टेड मैसेजेस भी भेजे और बहुत से ट्रॉमेटिक मेरे ख्याल से उसके साथ इंसिडेंसेस हुए थे। वो उस बच्चे ने जब ग्रेजुएट किया उसने कहा मैं तो लॉ में काम ही नहीं करना चाहता, क्योंकि वो सोचता रहता था कि मैं इनको किस तरह अकाउंटेबल होल्ड कर सकता हूँ, ये इतने पावरफुल लॉयर हैं, ये तो मेरा अभी करियर शुरू नहीं हुआ है, मेरा करियर तबाह कर देंगे। तो मैं ये भी पूछना चाहता हूँ सीनियर वो क्लास है कि लोगों को कॉल आउट कल्चर और सोशल मीडिया पे इस तरह की चीजें बहुत बुरी लगती हैं। आप मुझे बताएं, अगर कोई और आपने एवेन्यू ही नहीं दिया अकाउंटेबिलिटी का किसी को, तो ये वॉइसलेस कितनी देर लोग रहेंगे? किधर ये जाएंगे इस तरह जस्टिस मांगने? और मेरे ख्याल से ये प्रोफेशन को खुद ही लगेंगी सबसे ज्यादा चीजें, क्योंकि बहुत से ब्राइट लोग, बहुत से ऑनेस्ट लोग जो हैं वो इस प्रोफेशन कभी नहीं एंटर करेंगे, क्योंकि नॉट एवरीवन वांट्स टू गो थ्रू दिस सॉर्ट ऑफ मेंटल ट्रॉमा जो रिक्वायर्ड है लीगल प्रोफेशन में रहने के लिए। That is very, very shocking. I mean, I'm speechless at the incidents that you've narrated. And again, moving forward to talk about, what's the alternative to that? And if these are the challenges that young voices are identifying, and, obviously, abhi to sunne wala koi nahi hai, but I hope that, kal ko we can push for better reforms. Lekin I know कि वो भी all those efforts are met with such hostility, and as if there's this active endeavor to maintain the status quo. पता नहीं जैसे कोई change लाना चाहता ही नहीं है। रेगुलेटरी कैप्चर भी एक रीजन है उसका। और जैसे हमारे आपने देखा बार काउंसिल के इलेक्शंस हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल हो गया, पंजाब बार काउंसिल हो गया, तो वहां पे भी accessing those in a representative capacity is probably also very problematic, क्योंकि अभी कुछ पिछले साल ही शायद उन्होंने पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शंस की एज को फिर से रिवाइज किया है, तो वो यंगर जूनियर लॉयर्स की जगह ही नहीं है। एंड आई थिंक ये जो आपके रेगुलेटरी इदारे हैं ये भी उतने इंक्लूसिव नहीं है जितने पोटेंशियली हो सकते हैं। लाइक दे नीड टू हैव मोर डाइवर्सिटी ऑन देयर बोर्ड्स, देयर नीड टू बी स्पेशल सीट्स जिसमें यंग लॉयर्स भी रिप्रेजेंटेड हों, विमेन भी रिप्रेजेंटेड हों, जितनी भी हमारी मार्जिनल क्लासेस हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन एक रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में इन अदारों के अंदर होनी चाहिए, जो कि फिलहाल नहीं है और इस पे ना कोई बात होती है। इनफैक्ट एक्टिव स्टेप्स लिए जा रहे हैं टू मिनिमाइज एंड टू मेंटेन दैट हेजमनी जो कुछ चंद लोगों की है ओवर दीज रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस एज वेल। तो आई गेस उसके ऊपर भी बात मोइज अगर आप थोड़ी सी कर दें, दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव बता दें, सोल्यूशंस की तरफ भी अगर हम जाएं कि हम किस तरह से चाहेंगे कि लीगल प्रोफेशन रिस्ट्रक्चर हुए और ये जो कंसर्न्स होते हैं एम्प्लॉयर्स के और जो राइट्स हैं एम्प्लॉइज के, ये हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? Moiz, we can't hear you. Can you hear me? Yes.
Yes, now So we can. I graduated from a law school. I went to Lums for my undergrad, where I felt that I learned a lot of skills which are extremely important in the first year. But as Hassan said, that no law school in the world can teach you everything that you will be doing at law firms. And throughout the world, we see that even law schools outside Pakistan, no matter how good a law school is, there is a realization on the part of law firms that there are certain skills that you will have to teach those lawyers in their first or second years. But only in Pakistan do you see this sense that while you're learning something, you will not be paid. हम अक्सर सुनते हैं कि वुकला आपको बड़े सीनियर वुकला कहते हैं कि अभी हसन ने जो बात करी शॉर्ट टेम्पर की, as sad as these stories are, I don't think these stories are shocking at all. If you interview 10 young lawyers, I am sure at least 6 of those would have gone through these experiences, would have experienced these things at their law firms. I think the people in this panel, many of us may have had bosses like that. Many of us may have had bosses who harassed them in the past, for instance. So और हम सब ने इस तरह की कहानियां बहुत दफा सुनी हैं. So I think one problem, and as we discussed this earlier as well, that in many of our law firms, there is no structure. There is no HR department. For instance, if your managing partner or if your partner is harassing you, most of these law firms, for example, do not have a committee or a person that you can go and report these instances to. इसी तरह हम अक्सर सुनते हैं जो वकला जिनका शॉर्ट टेम्पर होता है या जो इस तरह अपने एसोसिएट्स को मिसट्रीट करते हैं, वो आपको बताते हैं कि हमारे साथ भी यही हुआ था और हम आपको ये इसलिए सिखा रहे हैं, आपके साथ हम ये इसलिए आपको ट्रीट कर रहे हैं बिकॉज इससे आप टफ होते हैं, इससे आप सीखते हैं. लेकिन आई थिंक कोई एट द कॉस्ट ऑफ योर मेंटल हेल्थ आप कुछ नहीं सीख पाते. अगर आप एक ऐसी फर्म के अंदर हैं जहां आप सीख भी कुछ नहीं रहे, जहां पर आप इस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे हैं, आई थिंक दिस इज एक्चुअली क्वाइट this is not conducive. This is actually quite counterproductive to your learning. और यही वजह है कि बहुत सारे talented और capable लोग इस profession को बहुत जल्दी छोड़ देते हैं. तो एक शायर ने कहा था कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उसी को मार देता हूँ. तो मेरा ख्याल है हमारे सीनियर्स का भी बहुत ज़्यादा यही हिसाब है कि वो जब कहते हैं कि मैं आपका बड़ा ख्याल रख रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन आई थिंक वो आप बिल्कुल नहीं सीख पाते इस तरह के माहौल के अंदर. दूसरी आई थिंक जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है, आई थिंक दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक लैक ऑफ क्लैरिटी. इस पर पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अली ने बात कही कि व्हेन विल आई बिकम एन एसेट टू द फर्म. सो आपको in most law firms you're not given any regular feedback. So अगर आप काम कर रहे हैं, आपको बताया जाए कि अच्छा आपकी रिसर्च ये है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह आप इसको improve कर सकती हैं. Many seniors you see that their relationship with their associate is very transactional. आपको अपने एसोसिएट को पैसे नहीं देने पड़ रहे, वो आपको रिसर्च भी करके दे रहा है, कोई ना कोई आपको ड्राफ्टिंग करके भी दे रहा है, आपका काम चल रहा है. So that relationship is very one dimensional, where the associate does not know how to improve, what are the areas of improvement what are the areas in which he can improve, and what does he do to improve and increase his value to the firm. So I think ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Thirdly, आपने एक बात करी कि गैट आया है. I think in all honesty, I think there are some barriers to entry which should be in the profession. हमने माजी में ये देखा है कि बहुत सारे, and I think this is, हमने बहुत सारी firms के against बात करी. This is one area where I can express some sympathy with some law firms, that there are a number of lawyers in the profession who are not capable and who are not qualified to actually enter the profession. मैं आपको अगर एक example दूँ, I was in my first year of law school and I participated in a moot court competition, and a person who had just graduated from law school, had passed the bar, came in and was attending that moot. तो उसने मुझे कहा कि आज मैंने आपका मूड देख के फर्स्ट टाइम ये सीखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन भी कोई चीज़ होती है. I had never heard about this in the past. And अगर आप अमेरिका में किसी बड़े अच्छे लॉ स्कूल से भी ग्रेजुएट करते हैं, you will have to pass the New York bar, for example. You will have to pass the California bar, and that's quite difficult. हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर आपने अगर वकील बनना है, सबसे शायद आसान काम है वकील बनना. And those lawyers, because as we said that there is a regulatory capture at the level of the bar as well, because they then become voters of some office bearers at the bar, there are actually no barriers to entry. अगर आपके मुल्क के अंदर हर कोई वकील बन सकता है और अगर आपके मुल्क के अंदर कोई बैरियर है ही नहीं एंट्री का, तो फिर हम अगर मिनिमम वेज की बात करें, अगर हम जो है रेगुलेशन की बात करें, तो वो बहुत मुश्किल है. सो आई थिंक फर्स्टली हमने ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सारे लॉ स्कूल्स हैं, अभी आप देखें कि एवरीबडी ऑन दिस पैनल इज आइदर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन or from Lums. इसी तरह 3-4 आप अपने, you can count the good law schools in Pakistan on your fingertips. पाकिस्तान के अंदर कितने पंजाब के अंदर लॉ कॉलेजेस हैं, हमें शायद, I think we probably have lost count. आपने अपने लॉ स्कूल्स को भी बेहतर करना है, आपने अपनी बार के अंदर भी कोई ना कोई बैरियर्स टू एंट्री क्रिएट करने हैं. आपने देखना है कि क्या किस तरह एडमिनिस्टर होते हैं, आपका गैट किस तरह एडमिनिस्टर होता है, किस तरह आपकी बार के अंदर लोगों की एंट्री होती है. Only when you do that, then I think there can be a credible case for law firms to actually improve
the way in which they treat lawyers, because then you can make a case that आपके पास जो वकील आ रहा है वो एक particular एक minimum standard कम से कम fulfill कर रहा है, और फिर ये argument कि वकील जो आते हैं हमारे पास they have no value to us, I think ये case उनका बड़ा weak हो जाता है उससे. सही नहीं, मैं जो बैरियर्स की बात करी थी वो थी रिप्रेजेंटेटिव रोल्स के अंदर, जैसे बार काउंसिल की मेंबरशिप हो गया कुछ में, मेरा बेसिक मकसद उसमें था कि मतलब अभी वही बात है ना कि हम सब्जेक्टेड तो हैं लेकिन हमारी कहीं वॉइस नहीं है, देयर इज नो प्लेटफॉर्म. सो मे बी वन ऑफ द सजेशंस कुड बी दैट these bar associations and bar councils can be made more inclusive and diverse and represent the various voices that are there. But anyway, कुछ audience के जो हमारे questions हैं, उस्मान रजा जमील साहब काफी देर से comment कर रहे हैं Facebook के ऊपर, तो उनका मैं definitely add करना चाहूंगी, which is for everyone, कि किस तरह फिर ये जो gap है इसको collectively bridge किया जा सकता है, और young lawyers को खास तौर पे encourage कैसे किया जा सकता है इस तरह के माहौल के अंदर. existing हमारे पास कोई hope, कोई ray of hope है? What can you guys, being having gone through something very similar in recent past, आप लोग क्या suggest करते हैं to the young entrants in the profession? Should I talk or Dania, do you want to talk? It's an open, you can feel free to contribute to this, please. ओके सो इसी क्वेश्चन के साथ में मैं 2 पॉइंट्स एड्रेस भी करता हूँ. जैसे लॉ गैट की बात हुई, सी लॉ की बात हुई, दीज आर एग्जाम्स दैट आई स्टिल हैव टू गिव एंड आई एम स्टिल लुकिंग फॉर. इसके अंदर जो एक बड़ा मेन इश्यू है वो ये है कि आपको इतना सीक्रेटिव वे से पता चलता है कि ये एग्जाम हो रहा है कि कहीं अखबार में पब्लिश हो जाएगा, HEC की वेबसाइट पे जी वो नोटिस बोर्ड जो चल रहा है इतना जल्दी से उसके अंदर कहीं लिंक आ जाएगी, और उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है. सो यू रिलाइंग ऑन वर्ड ऑफ माउथ कि आपको पता चल रहा है कि अच्छा लॉ गैट होने वाला है, सी लॉ होने वाला है. मेरा खुद अपना एक्सपीरियंस हुआ, मुझे तो पता नहीं था कि मुझे सी लॉ करने की ज़रूरत भी है. और 2 दिन जिस दिन अपने दोस्त को कॉल की कुड यू कम पिक मी अप, उसने कहा मैं तो सी लॉ देने जा रहा हूँ, और मुझे उस दिन पता चला कि सी लॉ भी कोई चीज़ होती है. सो एक इन्फॉर्मेशन और एक हमें एक स्केड्यूल भी सेट करना पड़ेगा इन एग्जाम्स के लिए कि बच्चे को पता हो कि अच्छा मैंने ग्रेजुएट कर लिया, आई हैव टू गो फॉर माई इंटीमेशन, और उसके बाद ये 2 टेस्ट हैं जो मुझे देने हैं, बिकॉज आई बीइंग अ यूनिवर्सिटी लंदन ग्रेजुएट आई हैव टू गिव दैट सी लॉ एंड आई हैव टू गिव दैट लॉ गैट. अब आगे एक बात आ जाती है कि जैसे मोइज करेक्टली पॉइंटेड आउट कि एक आपका बार ऑफ एंट्रेंस ही होनी चाहिए. उसमें भी हम देखते हैं जैसे अब पंजाब बार ने काफ़ी दफ़ा वो मार्किंग लिमिट लो कर देते हैं. 50% मार्क आई बिलीव कि एक लॉयर है who's wanting to enter a profession where he'll be handling matters related to a life of a person should be able to maintain, वरना उसको इजाज़त ही नहीं मिलनी चाहिए फील्ड में आने की. He can re-give the exam. और वहाँ भी मैं वापस आता हूँ एक स्केड्यूल्ड कैलेंडर ऑफ एग्जाम के ऊपर कि आपका 3 महीने में 3 दफ़ा, आपका साल में हर 3 महीने बाद ये एग्जाम्स होंगे, कि बच्चे को पता हो, और अगर एक फेल हो गया यू कैन गिव अ री अटेम्प्ट. बार में आप री अटेम्प्ट दे सकते हैं न्यूयॉर्क बार वगैरह में. तो यहाँ पे कहते सिस्टम क्यों नहीं है? हमें एक टाइम बॉम्ब की तरह ये एग्जाम का क्यों फटता है? जहाँ तक दूसरी बात है, कुड यू प्लीज रिपीट हिज क्वेश्चन अगेन? हाउ encourage कैसे कर सकते हैं यंग लॉयर्स को इस वक्त करंट सर्कमस्टांसेस के अंदर? I think like एक जो बात है कि again like पे is a very technical area ना, जहाँ पे आपको बार बार कहा जाएगा आपको टीचिंग करते हैं. तो लेट्स से कि एक चीज होती है अप्रेंटिसशिप, इट्स अ पार्ट ऑफ कि मैं इंटीमेशन करूंगा तो मैं एक अप्रेंटिस हूँगा 6 महीने के लिए. यू टेक दैट एरिया एंड यू टेल योर पर्सन हु इज कमिंग एंड अपीयरिंग फॉर योर जॉब कि ठीक है अप्रेंटिसशिप में आई एम गिविंग यू द बेसिक वेज, बिकॉज उसके बाद तो एक लाइसेंस इंडिविजुअल हो गया. अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान ही इज अ रिलेटिव लॉयर, एंड देन यू आर टेलिंग हिम कि he can't, he still isn't a lawyer. Then train him for that. And also compensatory भी बात आपके साथ साथ चलनी चाहिए, but praise and at least some critique on what he is doing. Because I've had an opportunity to work for a employer who paid me really well. It was a project based work, and when the project ended he told me you could come and work for my firm. And when I went there a month in, he told me to my face that I can't really pay you, so it is up to you. And that for a lot of people would be why did this happen to me? But for me he was a shining angel, because मैंने कहा इस बंदे ने मुझे एटलीस्ट ये मुंह पे तो कह दिया कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, and you would be better suited and you are good enough कि you deserve pay, so you should move on to another firm and I can help you move on to a firm that they can sustain you. And he recently, when he got the ability to pay me, also called me back
called me up, you were a good individual. I want to offer you this job. So एक realization of capability भी जो है ना, वो भी एक बड़ी important चीज है. So आपको एक लॉ स्टूडेंट के लिए, मैं पंजाब बार के पास जब गया था पूछने के लिए जी लॉ गैट कब होता है या सी लॉ कब होता है, मुझे कहते हैं आप एचईसी से पता करें. एचईसी से पता करते तो एचईसी कहते नहीं जी पंजाब बार के सामने हमारा जब वो डिसीजन होएगा तो वो होएगा. एंड जहां तक आखिरी बात आ जाती है कि यंग लॉयर्स की रिप्रेजेंटेशन पंजाब बार के अंदर भी, उसके अंदर भी वी सी इन इलेक्शंस की एक बड़ी सिग्निफिकेंट क्लास डिवाइड इलेक्शंस में भी आ जाती है ना, कि आपके जो लोग रिप्रेजेंटेटिव्स पंजाब बार के अंदर भी हैं, आर दे रिप्रेजेंटिंग द व्यू इन जनरल, या वो जो उनके अपने एम्प्लॉयर्स होंगे वो उनका ही व्यू आगे कहते हैं बढ़ा रहे हैं. एंड सेकंड ऑफ ऑल, जो लास्ट में एक बात करना चाहूंगा, जो मुझे सीनियर लॉयर्स की जो अब जो पिछले 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो फेयरली वही लोग हैं जो मेरी गेन दे हैव फर्म्स. आप मुझे बता रहे हैं कि यू वेंट थ्रू दिस, व्हाई नॉट चेंज इट? बिकॉज जो आप जो प्रोफेशन में हैं वो बना हुए इन बातों पे कि डिस्क्रिमिनेशन हुई, राइट्स आपके टूटे, कुछ फ्लॉ था, एंड दे ब्रॉट अ चेंज टुवर्ड्स इट. दैट इज व्हाट लॉ इज. डिस्क्रिमिनेशन ऑफ राइट्स हुई, आपने चेंज लाइक, यू ब्रॉट लॉ इन टू फिक्स दैट. एंड here I'm being told कि we don't need to fix that, that is it. तो इन पे बट मेनली एक स्ट्रक्चर भी होना, कि जैसे सारों ने बात की, एक फर्म में आप जा रहे हो, एक आपको कोई बताने वाला हो, एक स्ट्रक्चर हो, बिकॉज देन आपको ही फायदा, एक फर्म को ही फायदा, यू आर गेटिंग लिटरली. फिर भी कि लाइक आई थिंक लाइक यंग लॉयर्स राइट नाउ वोंट बी इवन आस्किंग फॉर हायर पे. वो तो कह रहे हैं कुछ भी मिल जाए, आप उधर से स्टार्ट तो करो ना कहीं से. बात करें ना, मैं इसी के साथ नूर की तरफ जाना चाहूंगी. शी इज रेज्ड हर हैंड, बट आई आल्सो वांट कि हम बिल्कुल हमारा क्योंकि लास्ट लेग है कॉन्वर्सेशन का, तो एक थोड़ा छोटा छोटा कमेंट इस पे भी आ जाए कि लॉ फर्म्स या एम्प्लॉयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ली, बट आई फील कि कॉलीग्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है in how they create an atmosphere in the firm, whether it's discouraging, whether there's hostility. तो उसमें मतलब सीनियर कॉलीग्स भी क्या रोल प्ले कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, या उनकी किसी तरह से स्ट्रक्चर में उनको एम्बेड किया जा सकता है, या वही लेग पुलिंग ही रहेगी और हमने बेसिकली कुछ भी बदलना नहीं है, बस सब कुछ, और मतलब वही बात सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के ऊपर ही चलना है. सो नूर, we'll take your point and then closing remarks from all our speakers one by one. Whatever you would like to add to the conversation on any of the points that we've discussed, please feel free to do that. Starting from Noor. So I think what I wanted to say was that I think, as cliche as it sounds, we just need to get rid of, for now, like within the status quo, we need to really get rid of the mentality and the word that ragra kha ke aap kahin necessarily pahunchoge, and that you have to be part of this really bad system and keep tolerating things if you want to get somewhere. I feel like, and it's not just for the legal profession, I think it goes for any profession, at least. And I also understand that not everybody is in a place that where they can easily rock the boat and have no consequences. But I feel that that's one of the ways that you can create some sort of accountability. So I think just na sabne baat ki hai, our bar council, our like anything outside that particular firm, we don't really have any accountability mechanism. So I think two ways that you can probably, just to answer the gentleman's question, is that when you join a firm, I think just be clear about your expectations. आप क्या करना चाहते हो और आपको क्या उस जगह से मिल रहा है. And that means that when you go and interview, I think don't be shy. I think like Dania said, a lot of people are very shy to ask this question about pay or the number of hours or the kind of work that you're getting. And I think just be confident enough, or just be, I think, forward enough to ask that, listen, if I put in X number of hours or X number of years in this place, what is my, career growth going to look like? What's the graph going to be like? And I think, and once if you've joined it, I think just प्लीज डोंट फॉल फॉर कि आपने हम भी इसी चीज के थ्रू गए थे तो आपका भी बहुत जरूरी है इस चीज के थ्रू जाना. दो sacrifices aren't really worth it. And I think when someone is making an excuse, regardless of whether that's a partner or a senior colleague or whatever, just call it out. I think call it out in the sense, I'm not saying that you have a full blown fight, but
learn to identify कि मसला क्या है and आप उसके बारे में बात करो, because I think like Ali said that I'd rather appreciate someone telling me that, listen, I don't have enough litigation, so I'm not going to hire you. I have immense respect for people who say that we don't hire girls for litigation, as opposed to a firm putting themselves out as one of the most progressive law firms out there, luring you in and paying you very menial amount, getting the work out of you and wasting my time as well. So agar matlab senior लोगों के लिए उनके time की value है, then I guess they also need to understand and respect the fact that मेरे time की भी value है, and I might be at a very early stage, but it still matters to me. Like मैं ये initial 3-4 साल किस तरह spend करूँगी is going to shape my rest of my future and where I'm going to stand in this firm. So I think that's one of the ways that I think we can kind of bridge, or that's literally like the slight hope that I can give to people who are functioning within the status quo. And I think with this, I'll also just give my piece of advice is that when you see, or if you find yourself in a toxic workplace or in a place where there's lack of growth, your mental health is being sacrificed, please take it from someone who's been there that it's not worth it. मैं ये भी realize करती हूँ कि बहुत से financial constraints भी होते हैं, but like I said, call it out, or just realize that it's maybe probably time for you to leave and find another job and just part ways. And I think one of the most negative effects of all of this toxic workplace, senior lawyers culture is this, that it makes you question your own effort and your own ambition at some point. It really makes you question. You sit day in, day out, regardless of how many number of hours you spend, what your qualifications are, you will still end up sitting and wondering, am I doing enough? शायद मेरे में कोई कमी है, या शायद मैं ही X number of hours नहीं put in कर रही, या मैं उस दिन जल्दी दफ्तर से चली गई थी इसलिए मुझे ये केस नहीं मिला. And I think these 6 years have taught me that that's not it. I'm sorry, it just stems from their own personal insecurities, which they really need to get rid of. And I think to young lawyers, just recognize that, don't let it affect you, have confidence and appreciate your effort. Like, just don't, on your end, don't slack, do what you can do and recognize that that's good enough. And I'm not saying that don't work hard and keep building yourself up, but don't question it because someone else is refusing to mend their ways. Like, that's my piece of advice. I think amongst young lawyers, they could have something of a support group or a network as well, whereby you can uplift each other at least, and that is probably one way to develop the kind of association that senior lawyers have amongst each other, and maybe then eventually one day we can collectively put forward our perspectives and push for change. So final thoughts on this entire discussion that we've had, starting from Hassan, then Dania, Moiz, Noor, you've already made your points, and so we'll just close with Ali afterwards. So Hassan, I think जो एक बड़ा अच्छा पॉइंट नूर ने किया है, जो कि ज्यादा मेंशन नहीं होता, वो ये है कि आप नोट करेंगे कि जो यंग एसोसिएट होता है, यंग लॉयर होता है, वो एक परपेचुअल स्टेट ऑफ गिल्ट में रहता है. आज मैं क्या जल्दी तो नहीं चला गया, आज मुझे शायद क्लास कैंसिल तो नहीं कर लेनी चाहिए जो मुझे पढ़ानी चाहिए, आज मैं अपनी फैमिली ऑब्लिगेशन सैक्रिफाइस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए. एक परपेचुअल स्टेट ऑफ गिल्ट है कि अगर मैं ये चीज कर लूं, अगर मैं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में सोच भी लूं तो क्या होगा. और ये बहुत टॉक्सिक चीज है जो अब जाके रियलाइज होता है. और मैंने इस चीज से सफर किया है और मैंने अपने कॉलीग्स को भी देखा है. मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने लॉ फर्म्स में देखा है कुछ लोग रात 10 बजे 11 बजे तक वैसे ही बैठे रहते थे, बस इसी चीज को दिखाने के लिए कि हम तो बड़े लेट काम कर रहे हैं. ये मेंटालिटी कौन सी प्रोडक्टिव मेंटालिटी है, लुक बिजी डू नथिंग वाली.
राइट। और मैंने देखा हुआ है कि लोग जो सुबह 8 बजे आते हैं और समझे 5 या 6 बजे कहते हैं कि हमने घर जाना है क्योंकि हमारी कोई फैमिली ऑब्लिगेशंस हैं, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होती है, क्योंकि जो उस्ताद साहब हैं वो काम ही शुरू 2 बजे करते हैं, 3 बजे दोपहर को करते हैं। ये कई लॉ फर्म्स में, लिटिगेशन लॉ फर्म्स में तो ये बड़ा कॉमन है कि उस्ताद साहब कोर्ट शोर्ट से, चलो हो सकता है कोर्ट से वापस आ रहे हैं, कभी कभी वो लेट उठते हैं या जो भी होता है, कि वो आते ही अगर 4 बजे है, तो जो सुबह 8 बजे से बैठा हुआ है तो वो क्या करे, राइट। मतलब स्पेशली फीमेल कॉलीग्स मेरी कुछ होती थी, उनका आई मीन हमारी सोसाइटी है ना, आपको रियलाइज तो करना चाहिए, कईयों का होता था कि उन्हें घर 7 बजे या कुछ जाना पड़ता था जब वो शुरू करेंगे प्रैक्टिस। अब वो 8 बजे से सुबह आई हुई है, और अगर बॉस आ रहे 3 बजे हैं, तो आई मीन अनफेयर है ना एक तरीके से। मैं जो क्लोजिंग थॉट्स इसमें देना चाहता हूँ, मैं एक दो चीजें जो रिसेंट काफी कॉम्पनसेशन पे भी डिबेट्स और कुछ जो सीनियर वकला पॉइंट्स मेक करते हैं इन चीजों को जस्टिफाई करने के लिए, मैं उन्हें रिबट जल्दी से कुछ पॉइंट्स करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि काफी लोग कहते हैं, एक पॉइंट किसी ने मेक किया था कि देखिए आप जब यूनिवर्सिटी जाते हैं 3 साल 4 साल, लम्स में 5 साल होता है, तो आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, तो आप ग्रेजुएट करने के 2 साल बाद तक भी अगर डिपेंडेंट रह जाएं या डगरा खा लें तो क्या जाता है, वो भी अपनी ट्रेनिंग में या कंटिन्यू एजुकेशन में देख ले। ये लोग क्लियरली उन लोगों के बारे में नहीं सोच रहे जो कि यूनिवर्सिटी जाते हैं स्कॉलरशिप्स पे, या वाइल वर्किंग यूनिवर्सिटी के खर्चे पूरे कर रहे होते हैं, या एक और सिटी से आते हैं और इसलिए हॉस्टल्स में रह रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज में। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं और जो कि वाइल स्टडीइंग कुछ स्कॉलरशिप से अपनी फीस पे कर रहे थे और कुछ वाइल वर्किंग पे कर रहे थे। एंड आई थिंक ये कहना कि आप 2 और साल रगड़ा खा लें इज कम्प्लीटली अनफेयर, और एक ब्लाइंड स्पॉट है जो आप इन लोगों को देख नहीं सकते, स्पेशली जो लोग बाहर के सिटी से आते हैं काम करने के लिए। दूसरा, ये जो कॉन्सेप्ट है कि आप एम्प्लॉई नहीं हैं, आप उस्ताद के शागिर्द हैं। मुझे उस्ताद नहीं चाहिए। मैं बड़े क्लियरली ये कहना चाहता हूँ, आई थॉट कि ये बात सही है जब शुरू किया था लॉ, कि हाँ उस्ताद होता है और उस्ताद एक गुरु की तरह होता है जो आपको पॉलिश कर देगा। आई डोंट थिंक हमें ये जरूरत है। आई डोंट थिंक हमें उस्ताद और शागिर्द की रिलेशनशिप चाहिए, क्योंकि जब उस्ताद आप किसी को बना लेते हो, इस तरह के गुरु बना लेते हो, आप उसे ऑलमोस्ट एक गॉड लाइक फिगर और ये जो वेनरेशन बना देते हैं, वो फिर अलाउ करती है कि वो इंसान बहुत सी एक्सप्लॉयटेटिव चीजें करना शुरू हो जाता है लोगों के साथ। और मैंने तो यही देखा है, जो इस तरह के लॉयर्स हैं वो अक्सर इट स्टार्ट्स गोइंग टू देयर हेड। आई थिंक एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, एंड आई एम मोर देन हैप्पी विद बीइंग एन एम्प्लॉई। बनाएगा कौन ये हसन ये स्ट्रक्चर? आई थिंक हमें खुद एक तो निदा इस चीज पे, आई थिंक अब जो लोग हैं उन्हें रियलाइज करना चाहिए कि ये जो जस्टिफिकेशन है कि मेरे साथ बुरा हुआ था तो आपके साथ भी होना चाहिए, ये तो खैर टेक्स्ट बुक बुलिंग और अब्यूज की डेफिनेशन है ना, कि मैं बचपन में बुली हुआ था तो चलो अब मैं भी और लोगों को करता हूँ, इसकी ये तो कोई सेंस नहीं बनाती। मगर आई थिंक हमें एज वी ग्रो, हमें एक तो कॉल आउट भी करना चाहिए और यंग लॉयर्स को हेल्प करना चाहिए। दूसरा, आई थिंक बार एसोसिएशंस कंप्लीटली फेल कर रही हैं और उनकी रिस्ट्रक्चरिंग तो वैसे ही जरूरी है इन एवरी एस्पेक्ट। तीसरी चीज, आई थिंक क्योंकि बार एसोसिएशंस को एट द वेरी लीस्ट मिनिमम थ्रेशोल्ड्स डालने चाहिए ऑफ कॉम्पनसेशन, ऑफ फेयर ट्रीटमेंट, ऑफ एबोलिशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट। ये सारी चीजें जरूरी हैं। बाकी मुल्कों में ये चीजें हो रही हैं। किसी और आप अमेरिका में जाके कहें ना कि मैं औरतों को एम्प्लॉय नहीं करता, आप पे सिविल राइट्स एक्ट का केस हो सकता है। हमारे लेबर लॉ में कोई है ही नहीं प्रोटेक्शंस लॉयर्स के लिए। आप लॉयर्स को तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हम साइन करते। कितने यहाँ फर्म्स कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती हैं और वो पे कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स कौन करेगा? वकील के खिलाफ कौन केस फाइल करेगा? यंग लॉयर केस फाइल करेगा? वो तो दिखावा है। जब तक बार एसोसिएशन या एटलीस्ट यंग लॉयर्स खुद किसी तरह की यूनियन तो शायद नहीं बनेगा, मगर कोई पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, जिस तरह मोइज ने कहा था, अगर कोई इस तरह की चीज ना हो तो
ये सिस्टम तो नहीं चेंज होगा. हम खुद कर सकते हैं कोशिश, हम खुद एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, बट हमें सपोर्ट चाहिए इस चीज को करने के लिए. तो मेरे ख्याल से ये मेरी कुछ क्लोजिंग थॉट्स होंगी, बाकी मैं फिर बाकियों को बात करने दूंगा. थैंक यू सो मच. दानिया, विल कम टू यू. आपने मेंटल हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले रेज किया था, एंड उसके ऊपर इनफ बात नहीं हो सकी क्योंकि इसकी डेफिनेटली मेंटल हेल्थ इम्प्लीकेशंस भी हैं, सारे इश्यूज की जो हमने देखा है. एंड उसी के साथ अगर आपने क्लोजिंग कमेंट्स भी हमें दे दें. मैं पहले एक अली ने पॉइंट रेज किया था कि भाई यू बीन इन द फील्ड, व्हाई आर यू नॉट चेंजिंग थिंग्स, राइट? सो उसको रिस्पॉन्ड करना चाहूंगी, बिकॉज आई थिंक ये हम भी सोचते थे जब हम फील्ड में थे कि हमारे कुछ फर्म्स में सीनियर फीमेल लॉयर्स हैं या सीनियर मेल लॉयर्स हैं, व्हाई आर दे नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर अस. अब जब आप व्हेन यू आर इन द फील्ड फॉर सम व्हाइल, तो फिर आपको रियलाइज होता है देयर आर सो मेनी बैटल्स दैट यू कैन फाइट. एक तो अगर आप क्लास डिवाइड है जो फर्म्स में, आपको बहुत ज्यादा जाके फील होना स्टार्ट होता है, तो आपको सबसे पहले उस चीज पे, उस फ्रंट पे बहुत सारी बैटल्स लड़नी पड़ती हैं. जैसा मैंने मेंशन किया था कि वो जो 2 घंटे कम्यूटिंग के थे मेरे, या जो करीम वाला जो मुझे या ऊबर वाला प्रॉब्लम होता था कि मुझे रात को लेट नहीं जाना, कॉन्स्टेंटली हैव टू रिमाइंड द पार्टनर्स प्लीज मेरे साथ पहले काम कर लें, मतलब ऑफिस आवर्स में काम कर लें. इट वाज मेड टू फील की बड़ी अनरीजनेबल रिक्वेस्ट है कि रात को 10 बजे काम ना करें, शाम के 5 बजे काम कर लें, राइट? तो ये एक तो ये बैटल हो जाती है. फिर इफ यू आर डूइंग एन एक्स्ट्रा जॉब, अगेन हसन ने पॉइंट आउट कर दिया, उस पर तो मैं नहीं जाऊंगी, आपको उस पर भी बार बार जस्टिफाई करना होता है कि आप ही ने मुझे कहा था कि एक्स्ट्रा जॉब करें. अब मैं जब वो कर रही हूँ या वो कर रहा हूँ, तो आप फिर मुझे कह रहे हैं कि उसको टाइम क्यों दे रहे हो. अब वो एक बैलेंस उनको खुद भी समझ नहीं आ रहा होता. फिर यहाँ पे आपको एक बैटल फाइट करनी पड़ी होती है. थर्ड आपको बैटल फाइट करनी पड़ी होती है कि एक जो प्रॉब्लम अभी तक आई थिंक हमने उसको टच अपॉन नहीं किया, वो है इफ यू आर अ फर्स्ट जनरेशनल लॉयर, क्लास इश्यूज आ गए, सारे इश्यूज आ गए. ऑन टॉप ऑफ इट, अगर आप फर्स्ट जनरेशनल लॉयर्स हैं, यू मिस्ड आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. You don't have the family ties to the legal field. You don't have the connections to the legal field. आपको जो एक impunity जो kind of third और second generation lawyers को मिल रही होती है, जो आपके colleagues होते हैं for the same behavior, और उनको कितना relaxations मिल रही होती है, वो सब आपको नहीं मिल रही होती. जो opportunities उनको मिल रही होती हैं, उस तरह से आपको नहीं मिल रही होती. There are a lot of things that they can say and call out their senior lawyers on, and it will be taken, अच्छा हाँ ये तो बड़ी valid critique है. But if you tell them that, and if you tell them the same thing, they'll say, आप हर चीज पे मसला निकाल दिए, आपको हमने टाइमिंग तो एडजस्ट करके दी है, आप इस पे भी बात करें, आप इस पे भी बात करें. सो आपको अपनी बैटल स्पॉट एक तरह से आपको देखना पड़ता है कि ओके, आई एम अ पर्सन, टुडे मैं कौन सा टैब ओपन करूं और आज मैं किस पे बात करूं. तो आपको कॉन्स्टेंटली प्रायोरिटाइज करना पड़ रहा है. अब निदा इज डूइंग सम ब्रिलियंट वर्क फॉर फीमेल लॉयर्स, राइट? I want to join her, but again अपनी commitments है, क्योंकि law firms का time commitment इतनी ज़्यादा होती है. Even if you feel passionate about something, you cannot do it because आपके पास ना time है, ना आपके पास वो mental energy है. अब हमारी firms जो हैं, वो कहने को on paper 9 to 6 आपको email में लिख देंगे कि this is your work timing, Saturdays कहीं के on हैं, कहीं के off हैं. But the reality is, you're working 12 hours, 14 hours a day. Sometimes इसमें से आप कुछ भी नहीं कर रहे होते, वो एक अलग बात है, but you have to be in the office. Then you're also expected to work on Sundays because सारे matters तो urgent होते हैं litigation में ऐसा तो कोई matter बहुत कम आते हैं जहाँ आपने rates file करनी होती है, जिसमें time bound matters नहीं होते. So आपको Sundays को भी काम करना पड़ा होता है. फिर उसके बाद आप वो जो fatigue है, exhaustion है, it gets to you. अब मैं एक और personal incident cite करूँगी, बहुत छोटा सा, कि मेरी my father passed away, उनकी बरसी थी. अब it was on a Sunday. संडे को मुझे ऑफिस में बुलाया गया और पता था कि मेरे वालिद साहब की बरसी है. अब उसी केस में 3 और लोग भी काम कर रहे हैं, बट चलें ठीक है, मैं चली गई ऑफिस. मुझे था कि मुझे वापस जाना है, मुझे घर जाना है, मेरी familial obligations and again it's a Sunday. I should not be made to feel guilty about not being in the office. नहीं, आप ऑफिस आए, ऑफिस आके सारा काम कर लिया. I did not get any appreciation. The message I got while leaving the office is, सारा कुछ तो कर लिया, प्रिंट आउट मेरे टेबल पे नहीं रखे गए. सो यू आर लाइक ये क्या एटीट्यूड है दैट अफेक्ट्स यू. और नूर ने बिल्कुल ठीक कहा कि नो अमाउंट ऑफ नथिंग जस्टिफाइज स्टेइंग इन अ टॉक्सिक एनवायरनमेंट. यू हैव टू लीव इट.
is आपकी सेहत If या आपकी 90% of your firms are like that, what do you do? Where do you go? That's why a lot of young people have started doing their own practice, which has its own challenges. So, and then they continue the same cycle. So we're not being able to break out. I'm like, we have like very few examples of law firm job literally fingertips पे कर सकते हो जहाँ पे थोड़ा बहुत कोई humane environment है, conducive environment है. But if like majority of your workplace is toxic, where do you go? फिर इसीलिए तो quit करते हैं ना लोग इतने ज़्यादा. और कई दफा आप स्टे भी इसलिए कर रहे होते हैं because you love the field. मोइज ने बहुत अच्छा शेयर कहा था कि ना you have this immense love for your field and you want to stay and you want to prove कि नहीं मैंने इतनी अफवारी कर ली है कि मैंने 2 साल लगा दिए 3 साल लगा दिए 6 साल और लगा देती हूँ फिर अपनी फर्म स्टार्ट कर लूंगी पर आपको फिर अंदाजा होता है कि नहीं मे बी यू नो दैट साइकिल नीड्स टू ब्रेक बट वही कि आप अगर जल्दी क्विट करते हैं आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बारे में उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते मेल लॉयर्स के लिए फिर भी ऑप्शंस हैं मे बी नॉट दैट लुक्रेटिव बट फीमेल लॉयर्स के लिए वो फर्म्स और कम होती जाती हैं तो आपने यहाँ से क्विट कर दिया सेम प्रॉब्लम के लिए आप एक और फर्म जाएंगे वहाँ पे आपको अपने आप को थोड़ा सा नोटिस करवाने में ही अगले 6 महीने लग जाएंगे तो फिर द न्यू थिंग के कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लो माइट एज वेल स्टे हियर राइट सो ये सारे चैलेंजेस हैं इट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कॉल आउट 2 और चीजें जो मैं बिल्कुल एक मिनट में करूंगी बिकॉज हमने टच अपॉन नहीं की हैं आई थिंक एक बार रूम पॉलिटिक्स निदा ने उसकी बात की थी सेपरेट बार रूम्स हैं इसके बहुत एडवांटेजेस हैं पर इसका एक डिसएडवांटेज है कि जितनी भी पॉलिटिकल लॉबिंग हो रही है जितनी भी नेटवर्किंग हो रही है वो अभी भी मेल बार रूम्स में होती है फीमेल्स वहां पे जाने से कोई मना नहीं आपको करता जब भी आप ये बात रेस करेंगे आप यही कहेंगे कि आप किसी ने मना किया बट वहाँ अभी भी इन्वायरमेंट इतनी इनेबलिंग नहीं है कि फीमेल लॉयर्स आके उस तरह से पार्टिसिपेट कर सकें एक्टिवली लॉबिंग में दूसरी प्रॉब्लम ये आ जाती है एंड अगेन इवन दो अब बहुत सारी फीमेल्स आ गई हुई हैं इस प्रोफेशन में वन थिंग दैट यू नीड टू रियलाइज इज कैरेक्टर असैसिनेशन अभी भी बहुत है आप एक लॉयर हैं अगर आप बार बार फीमेल बारूम में बैठी हुई हैं और ये हमने इतनी सीनियर रिस्पेक्टेड आसमा जहांगीर के बारे में भी ये बातें सुनी है राइट एंड इट वाज वेरी कोई उनके काम के बारे में बात नहीं करता था पहले लोग उनके कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे होते थे हाँ वो खातून है वो तो इसलिए अपनी जगह बना ली टाइप फिर जो थर्ड बात हम कर रहे हैं तो आप एज फीमेल आप उससे बहुत एक्सक्लूडेड होते हो तो थर्ड चीज़ है द लास्ट पॉइंट बिकॉज मैं रिफॉर्म्स की बात नहीं करी वो हसन और नूर ने ऑलरेडी कर लिया वो आई थिंक मोइज और अली भी कर देंगे बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट बात है हमारी कॉन्वर्सेशन से मिस होगी वो ये कि अ लॉट ऑफ लॉयर्स आर जॉइनिंग द फील्ड ए टू गेन सोशल कैपिटल and B to gain impunity for their actions, while at the same time a lot of law firms are hiring people for this purpose of just obstructing justice. So for instance, criminal side में आप देखें बेल की पिटिशन आर्ग्यू करनी होती है बेल एप्लीकेशन तो 20 लॉयर्स को ले आते हैं अब 20 लॉयर्स को लाने का क्या तुक होता है कि हम जज को प्रेशराइज करेंगे और फिर वी माइट गेट एन ऑर्डर इन आवर फेवर राइट अभी भी जस्टिस आयशा मलिक ने कुछ बहुत कमेंडेबल चीज़ें की हैं जिसमें से एक ये चीज़ थी कि जब फीमेल लॉयर आके आर्ग्यू कर रही है तो वो कहती थी कि जो मेल लॉयर्स हैं वो साइड पे हो जाए बिकॉज ट्रायल कोर्ट्स में ये होता है कि एज अ फीमेल आप जब आर्ग्यू कर रहे होते हैं ना यू आर हडल्ड बाय मेल लॉयर्स राइट एंड मैं तो वहाँ पे पेंसिल भी रखी होती थी बट आप आर्ग्यू करते हो आप किस चीज़ का ध्यान रखो कि आपको कोई पीछे से आके कोई इनअप्रोप्रिएटली टच ना करते आप आर्ग्यूमेंट्स पे नहीं कर पाते और वो आपको इंटिमिडेशन टैक्टिक्स है फिर ये वाली जो चीज़ें हैं कि लॉयर्स क्यों एंटर कर रहे हैं फिर लॉ फर्म्स उनको क्यों हायर कर रही हैं और इसका एक जो अफेक्ट हो रहा है वो ये हो रहा है कि लॉयर्स को आप ये सिखा रहे हो कि इंसोलेंस इज समथिंग दैट यू शुड एस्पायर टू डेफरेंस टू कोर्ट इज समथिंग दैट इज अगर आप नहीं भी शो कर रहे दैट इज फाइन एंड इन टर्न पे ये लोगों का जुडिशरी और लीगल प्रोफेशन के बारे में जो एटीट्यूड है जो आपको फिर बाहर फेस करने को मिलता है उसको भी अफेक्ट कर रहा है कि आपके मोराल को भी अफेक्ट कर रहे हैं व्हेन यू आर जॉइनिंग द फील्ड बिकॉज जब आप ज्वाइन करते हो आपको सबसे पहली बात अच्छा तुम लायर हो कि लॉयर हो तुम वकला गर्दी वाले लॉयर हो टाइप जो कमेंट्स आपको सुनने को मिलते हैं अपने प्रोफेशन के बारे में बार बार ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स दैट यू आर फेसिंग राइट सो अगेन जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं ये सारी ग्राउंड रियलिटीज हैं जिसको हमने अपने जहन में रखना है और फिर रिफॉर्म्स की बात करनी है अब ओवर टू द नेक्स्ट पर्सन Yes, I mean, it's very unfortunate that a profession that is built upon justice and human rights and fundamental rights, and while we are fighting for all of these values for our clients, theoretically at least, these are the very real challenges and these are the very rights that, you know, we don't seem to find for our own ranks. And that's actually the biggest dilemma and the biggest cause for worry for me. So Moiz, your final thoughts. Gee, I have very
brief 3 final points that I'd like to address. We spoke about why lawyers who've been bullied or lawyers who've actually faced these issues, why don't they create a change? And that's simply because we have an exploitative system. And as soon as you become a beneficiary of the system, you have no desire to change the system. And while a number of young lawyers who 4 or 5 years into this profession are actually improving and are actually on their part are making sure that they pay their associates well, but as a young lawyer entering this profession, I should not have to rely on a senior's generosity or their magnanimity to get a living wage. It should be regulated, because I think somebody raised this point earlier as well, that the few law firms that pay you well, they have a sense of, they have this attitude where you should be grateful to them for paying you. And it should not be that. I should get paid not because my senior is generous, but because that is my right. I am working and I'm for a certain number of hours. I have a certain education, so I'm entitled to a salary. Now, the second point that I'd like to raise is that I think a number of us have spoken about law firms, about the Bar Association, but we haven't really spoken about the judiciary. I think Noor spoke about how at the trial court level, there are certain attitudes that you have to face. I think even at the High Court and at this level of the Supreme Court, there are some very sexist attitudes that women lawyers, for example, have to face. An incident that I faced, that I actually witnessed myself, a very senior lawyer was arguing before the Supreme Court. And a former Chief Justice of Pakistan actually said to this woman that, "Madam, you take advantage of being a lawyer, of being a woman." And that's the kind of statements that you do not expect from someone who's sitting on that office. Similarly, I was part of a criminal bench once, and I heard a prosecutor saying to a female lawyer कि आप तो अक्सर आर्ग्यू करे बगैर ही जीत जाती हैं, हमें इतना आर्ग्यू करना पड़ता है, आप आर्ग्यू करे बगैर जीत जाती हैं. And similarly, and these are very blatant instances, but then you have subtle instances as well. So for example, if a male lawyer like Hassan A, for example, if we argue, they would address us as Mr. and our last name. But the moment a female lawyer comes, a judge suddenly begins calling her Bibi. Bibi aap ye sunne, Bibi aap wo sunne. So I think the attitude is very condescending towards female lawyers. So I think ये जब हमारे benches के ऊपर हम अक्सर देखते हैं कि harassment के cases, हम rape के cases 4 या 5 मर्द बैठ के सुन रहे होती हैं. So I think while I understand that people who are entering the profession cannot fight all the battles, but I think we also need a number of women entering this profession, entering the Bar Associate, the Bar Councils, and the judiciary as well, so that they are more sensitive to these nuances and these issues. I think the last message that I would like to give to young people who are entering this profession, because I think until you sit amongst people who are your age, or who have actually gone through all these experiences, you don't realize that the experiences that you've had are experiences that almost everyone has had in the profession. I think we've all gone through, and I wasn't aware. I mean, until now, I thought it was only me. But you realize that all of us have gone through this sense where you feel guilty when you go home early. You're made to feel guilty when you miss a family, if you actually go and participate in a family event. And I remember even through law school, there were lawyers who would actually tell us कि जब मैंने प्रोफेशन स्टार्ट किया था तो मैंने तो अपनी बहन की शादी भी अटेंड नहीं की थी क्योंकि मैं ये रिट ड्राफ्ट कर रहा था. And that is, I think, any profession that makes you feel guilty for doing what you like to do, and I think any profession that makes you, any job that makes you question your self-worth and that really jeopardizes your self-esteem, I think, and this may come from a position of privilege, but I think that's not worth it. आपको और बहुत सी ऐसी नौकरियां मिल जाएंगी जहां पर आपको वैल्यू भी किया जाएगा और जहां पर आपकी मेंटल हेल्थ उस तरह अफेक्ट नहीं होगी. और अगर आई थिंक आपकी एंड दिस माइट साउंड अ लिटिल क्लीशेड, बट आई थिंक अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, अगर आप जो है रोज सुबह इफ यू हैव टू ड्रैग योरसेल्फ टू योर जॉब, आई थिंक फिर आप शायद बहुत वहां पर सीख भी ना पाए. Thank you so much, Moiz, for very wonderful thoughts. I don't know why BB is considered a mark of respect, and how easily they justify कि जी हम तो BB कह रहे थे या मैडम कह रहे थे या जो भी, but I mean वही इतनी ज़्यादा ये inherent biases हैं कि इनकी sensitivity develop करना भी बहुत मतलब अरसा लग जाएगा when people actually realize that this can be derogatory or this can be problematic. But having said that, we'll move on to Ali for his final comments, and then we'll close the session. Achha, so before going on, I believe that all of the previous 4 that I've commented have had more experience than me, जिसके ऊपर मैं ज़्यादा structure के ऊपर इतना नहीं बात करता, but talking to lawyers जिन्होंने अपनी firms बनाई हैं, नई firms हैं, I believe कि आप अगर एक young lawyer को तैयार कर रहे हैं ना, तो वो आपकी एक firm का asset है. आप
उसको अगर तैयार कर लेते हैं ना, तो आपको वो टेंशन नहीं लेनी कि अगर मैं कोर्ट गया हुआ तो पीछे से केस कौन तैयार कर रहा है. वो तैयार कर सकता है. इफ यू जस्ट प्रिपेयर हिम वेल इनफ, ही कैन प्रिपेयर दैट केस, ही कैन फाइंड आउट ऑल द रिसर्च यू नीड एंड ऑल्सो इवन ड्राफ्ट इट. इफ यू प्रिपेयर हिम, उसका फायदा क्या होगा? यू विल हैव मोर टाइम ऑन योर हैंड टू गो लुक फॉर अदर क्लाइंटेल, बिकॉज आपका मकसद ग्रोथ है. So as a, just a basic business model, it benefits you. Why do you need female lawyers? Because there are a lot of cases where women just generally feel comfortable talking to female lawyers, and that isn't just family cases. मेरी अपनी अम्मी और खाला जो हैं वो अपने मेल लॉयर को रेंट के ऊपर उसकी एडवाइस लेके would then always call their cousin who was a female lawyer कि यार देखो मुझे वो मर्द लूट तो नहीं रहा कहीं, ठीक है. So एक फीमेल लॉयर भी कंफर्टेबिलिटी लाती है, एंड नॉट जस्ट फॉर दैट, देयर आल्सो एक्सेप्शनल लॉयर्स. आपको मर्द के अंदर हमेशा एक एक्सेप्शनल लॉयर नहीं मिलेगा, आपको इक्वालिटी बेसिस पे चलना होगा, एंड यू आर मेकिंग अ बिजनेस मॉडल. ट्रीट योर फर्म एज सच. आप एक गाड़ी के अंदर एक पार्ट को रस्टी होने देते हैं, रस्टी होने देते, फिर आप कहते हो कि मैं प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहा. बिल्ड अप इट, कि आप एक्सपैंड करते जाओ. यू वांट टू ओपन अनदर ऑफिस, इफ यू हैव अ यंग लॉयर प्रिपेयर्ड इनफ, you can send him there to handle your work there or handle your meetings there, and that is how you'll progress. आप पैसे इसलिए बचा रहे हो कि आपको यंग लॉयर को पे ना करना पड़े. आप उसको पे करके पैसे कमाना ही शुरू कर दें. कम से कम चलें 2 साल की आपको थोड़ा और ब्रेंट वर्क करना पड़ेगा, बट you'll earn. Lastly, going to, because अगर वो पे करते हैं, सॉरी आई एम कटिंग यू, पर आई थिंक ये आपके पॉइंट से बहुत रेलेवेंट है कि अगर वो पे करेंगे तो वो इन्वेस्टेड फील करेंगे और वो शायद ट्रेनिंग पे भी ज्यादा फोकस करें फिर. बट अभी उनकी कोई स्टेक ही नहीं है, तो व्हाई वुड दे? बिकॉज अपेरेंटली द फियर इज कि जैसे ही वो तैयार होगा तो वो फिर अपने ओन पे निकल जाएगा और हमारी सारी जो है नो हाउ नॉलेज उठा के ले जाएगा. सो वो ऐसे ट्रस्ट में इन्वेस्ट नहीं करते, ऐसी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं करते, बिकॉज वही बात है कि जो इनसिक्योरिटीज इतनी ज्यादा हैं एंड ट्रस्ट डेफिसिट भी है, लाइक, एंड आई डोंट नो ये सारे इश्यूज किस तरह से एड्रेस होंगे, बट आई एम ग्लैड दैट यू नो वी बीन एबल टू ब्रिंग देम फॉरवर्ड. जी आप अपना लास्ट पॉइंट. जी इस पे मैं आखिरी बात करना, जो इवन ट्रस्ट डेफिसिट वाली बात है उसकी हमें समझ नहीं आती, बिकॉज लॉ के अंदर जितनी भी चीजें हैं दे कोडिफाइड, देयर बाकी प्रैक्टिस से आपने सीखी हुई हैं. सो वो चीजें अगर आपने बता भी दी, अगर इवन लेट्स से वो ब्रांच ऑफ करता है, इट इज बिकॉज यू आरंट एबल टू पे हिम. अ लॉट ऑफ लॉयर्स डोंट वांट टू मेक देयर ओन फर्म्स, they don't want to go and start a whole business because that is a whole daunting field. If you offer them a position कि आप वो पार्टनर बन सकते हैं और ये आप सेठ कल्चर से निकल जाए जहाँ पे मेरा बच्चा बनेगा, उसके बाद मेरा पोता बनेगा, उसके बाद उस पोते का नेफ्यू का दोस्त जो आएगा वो भी आगे पार्टनर लग जाएगा, लेकिन ये बच्चा जो मुझे ट्रस्ट दे के मेरे साथ काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ये कर रहा है, वो सीनियर एसोसिएट ही रहेगा. जहाँ पे आखिरी एक बात मैं डालना चाहूंगा यंग लॉयर्स पे कि, और I have friends who are going to be in 3rd year this year, they're going to be 2nd year और 1st year में भी कुछ आ रहे होंगे, कुछ लॉ में भी आ रहे होंगे. It is daunting, yes. और नूर ने भी एक बात की कि it is very scary. आप 3rd year end करेंगे, आपको डर ही पड़ा रहेगा कि आगे मेरा क्या बनेगा. But also always remember, ये मैंने भी सीखा था कि लॉ फर्म आपका अगर बहुत टॉक्सिक हो गया ना, आप कभी कुछ सीख नहीं पाओगे, जिस तरह सारों ने किया, because they've gone through it. I having 1 year experience, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जहाँ पे टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो गया, आप स्ट्रेस में रहोगे, आपको कुछ समझ नहीं आना, तो उसके ऊपर एक रियलाइजेशन रखो कि ये 6 बड़े नामों के अलावा भी ना इतनी ज्यादा लॉ फर्म्स हैं, क्योंकि आप आई थिंक सिविल कोर्ट किसी दिन चले जाएंगे, आपको काले कोर्ट के अलावा कुछ दिखता नहीं है. ये कहीं तो काम कर रहे हैं. I have friends who branched out of the network and have gone to smaller firms and have been managed to get paid there. So I feel कि universities को उसके ऊपर है कि they should also be in there when they're having lawyers over to come interview clientele. They should branch off to other places, and students, even law graduates, जब वो निकल रहे हैं, they should also look for other places than working at the top 5 or top 6, because they don't need you. Try to find a place that needs you and also put in the work to get there, and also stand up for what is right. अगर आपका, if you have people underprivileged in your work field जो पंजाब लॉ में से हैं, you have a car, आप उनको कारपूल कर दो. Look out for your fellow young lawyer, because that is what you have right now. You don't have an association, you don't have a political movement. At least आप एक केयर से देखोगे. because जब मैं इस प्रोफेशन में आया था, एक था कि आखिरी सॉरी बात है, I'm dragging on, but I was looking for advice on a law aspect from a lawyer, and this young senior lawyer called me into office. बेटा आपको क्या चाहिए? He sat me down and taught me. And I feel कि as lawyers जितने seniors भी हैं वो भी हैं, अगर आप उस नीयत से ऑपरेट कर रहे हो, आपको ही फायदा हो रहा है, because you're looking out for the care. इस वाली बात से आप निकलें कि जो स्ट्रक्चर था पहले मैं वही चलाता जाऊंगा, फिर then what are you changing? What difference are you? Then you can't criticize your previous employer as well. So ये बात है.
Thank you so much. Each one of you have really enriched this conversation, and I feel that we have been able to put forward some of the very important and some of the very deep-rooted challenges that are plaguing this profession. And it was important to have these voices out there because increasingly हम देख रहे थे कि ये issues उस तरह से address नहीं हो रहे. ये भी मतलब एक पहली कोशिश है इस तरफ, एंड आप लोगों के टाइम का, आपकी कंट्रीब्यूशन का बहुत बहुत शुक्रिया. आई होप दैट इसके ऊपर हम मजीद बिल्ड कर सकेंगे, एंड वी कैन नॉट जस्ट लिफ्ट ईच अदर अप बट ऑल्सो create more awareness around these issues, these challenges, because they're not they're not personal or specific to any one person or any one firm. They are structural, and they would need a collective effort to change and to reform. So with that, and being very hopeful for the times कि अब जो हमारे आगे आने वाले mid level के स्केलो प्रोफेशनल्स हैं या ये जूनियर्स जब सीनियर्स बनेंगे, I know it's a struggle, it's a process, it will take its due course of time, but if we can commence that today with this conversation and pledge to take it forward, I think we will have done our part, and that's all that we can commit to at this point in time. Your participation here in this conversation is testimony to that. So thank you so much for being here and for all your time. If there are any further questions or comments under the Facebook video, please do go through those on the page. And if you'd like to respond to any of those questions, you may do that. Thank you for organizing this, Nida. I think some credit should be given to you as well for at least bringing everybody together and getting this conversation out there. So thank you. Thank you so much. Thank you. It's an honor and pleasure. And with that, I'm going to close this. Thank you so much, everybody.